Good morning, all. It gives me immense pleasure to welcome you all for one-day workshop on patent drafting and filing procedure at Indian Patent Office. I welcome our respected guest speaker, Mr. Ganesh Hingmere sir, Principal Dr. S.S. Sarode sir, Vice Principal Dr. M.P. Dale ma'am, HOD Mechanical Dr. V.N. Chaugule sir, HOD Computer and President IIC-MESCOE Dr. N.F. Sheikh ma'am, HOD ANTC Dr. Mane ma'am, IPR coordinator Dr. Kota sir, and Dean Academics Dr. Raibole sir, and all faculties and our beloved students. It will be very insightful and informative session for all, especially to our young innovators. Now I request Dr. Raibole sir to introduce our respected guest and brief about the workshop. Good Can morning I to all please? of you. I hope my voice is audible. Yes, sir. Okay, thank you. Honorable guest speaker for today's workshop, Professor Ganesh Hingmere sir, founder, Great Mission Group Consultancy Pune, Management Trustees, Dr. A.J. Hake sir, Dr. E.S. Chandak sir, Dr. M.K. Sanap sir, Modern Education Society Pune, Principal Dr. S.S. Sarode sir, Vice Principal Dr. M.P. Dale madam, IIC President Dr. N.F. Sheikh madam, IPR Coordinator Dr. P.N. Kota sir, Dr. V.N. Chaugule sir, HOD Mechanical Engineering, coordinators of this workshop, Professor Vinay Varude sir, Professor Sushant Jadhav sir, all the heads of the departments, deans, my colleagues, and dear student participants. I am very glad to welcome you all to this one-day workshop on patent drafting and filing procedure at Indian Patent Office. At the outset, I extremely sorry for the delay due to this particular technical problem. This program could not started on time. Extremely sorry for that. I am very glad to mention over here that the workshop is organized by the Department of Mechanical Engineering in association with Institutions Innovation Council, MESCO, and Indian Society of Technical Education. The institution's Innovation Council is the initiative under Ministry of Education, Government of India to foster the culture of innovation among the all higher educational institutions. Now I take this opportunity to introduce our today's eminent guest speaker. Today we are having with us Professor Ganesh Hingmere sir. Professor Ganesh Hingmere sir is founder of Great Mission Group Consultancy Pune. This group is dedicated towards the promotion and protection of IPR in the country. He is also the founder and director of GMGC IPR Services Private Limited, a startup recognized by Government of India under the Startup India scheme launched in 2016. Professor Ganesh Hingmere sir completed his LLM from Cardiff University, UK, after completing LLB from renowned ILS Law College, Pune. He has also completed MPhil Economics from the University of Pune with a record of 91% grade point. Professor Ganesh Hingmere sir is a renowned intellectual property enthusiast and a winner of two consecutive National Intellectual Property Awards in the year 2015 and 2016 given by the Ministry of Commerce, Government of India. He has completed several professional trainings, namely at Japan Patent Office, Indian Institute of Foreign Trade, Indian Institute of Technology Kanpur, and NISCIR. He constantly supported various industries for their IPR registration and commercialization since 2002. He is a visiting faculty to most prestigious academic institutions in India and delivered more than 1,000 sessions in different states, including IITs and national law schools. He is a ardent reader and passionate writer with more than 200 published articles and numerous news articles in all majorly circulated newspapers of Maharashtra and India. He has also authored two books on economics and intellectual property rights. Manuscripts of two more books is under preparation. With this brief introduction, I would like to invite Professor Hingmere sir to start his session. Thank you. Over to you, Hingmere sir. Thank you very much, sir, for an opportunity to discuss the most important topic uh, and more practical way
because you have selected a very precise topic of drafting, and particularly to engineering background student. Uh, that is really a very good initiative, and I think my video is not allow me to interact you on maybe some other technical ground, but it's okay, fine. I'll directly shift to the presentation. Is it possible if the video is on? Otherwise, I'll immediately start my presentation. Yes, sir. No problem, sir. Because this is saying when I'm taking my cursor to video icon, they say you can share your video when you are done screen sharing. Okay. So that's fine, sir. If video is off, then there is no problem. Okay, fine. Let's start now this session. So again, thanks Vadia, thanks all faculties and participants. Today we are going to discuss about the patent, drafting of patent, what we can call technically a procedure for the granting of the patent. Before that, I have inquired with your authorities, with your professor, that what you have so far understood about the intellectual property right, and they said basic of intellectual property right is already conveyed to you all. I'm not going to talk much on that, but I'll share some facts and figures, so which may increase the interest on intellectual property right amongst you, and which will also give you an idea where we stand. Where we stand means I'm talking on Indian perspective, like where we stand. Where we stand. Here is the first slide I would like to share with you all. Where we stand. We here you will find the comparison. This is actually Times of India's report, where you will find we in India have contribution only 29% in the total patent filing. So 71% patent are filed by the foreigners. Here foreigners, I'm referring the various big industries like IBM, Microsoft. Sir, sorry to disturb you. Sir, can you make a slideshow? Okay. Okay. It's fine. Is it okay, sir? No, sir. अजून नाही झालं. Is it okay? Okay, sir. Okay. Carry on. Okay. So you may please request it to see the last 4 lines. 70% patents are filed by the foreigners. Here is the foreigners means foreign companies, IBM, your Microsoft, all big MNCs. They have filed more than 70% patent in India. And what is an impact? I would like to convey the most important equation with respect to the patent to understand this figure, particularly that one invention is equal to one patent and one patent is equal to one industry. I repeat this equation: one invention is equal to one patent and one patent is equal to one industry. So suppose I have invented a dust-free chalk and I have applied for a patent. What does it mean? I am the owner, I'm the holder, I'm having an exclusive right over that patent. So what does it mean? I have only got an authority to start a separate industry. So here is an equation you have to remember: one invention is equal to one patent is equal to one industry. So then what does it mean? How it affects that total Indian patent scenario? It will definitely affect that more than the 70% industries in India are proposed by the foreigners. And that should not be the case. We do not want to have an economic recolonization for India. So the money goes to the MNCs and we are just a laborer. Do not want to happen to that kind of a situation to be here in India. And hence such kind of workshops, such kind of training sessions, such kind of initiative is very much required. And I must congratulate to all the faculties and the SAIL or Vadia College in all. So here, that is the scenario need to be changed and such workshop is required, and we will take one by one on that. So here an academic contribution, why
if you understand the patent drafting, if you understand the significance of patent before that, and if you understand the Indian scenario, then I think that will help a lot to create more and more inventions, and patent filing would be increased, and career options, which is a very good in patent sector for engineering background students. I'm going to talk that maybe if time permits. So here is the academic contribution. You'll find that we all are using intellectual property right. We are handling n number of patents, but those patents belong to some big MNCs or either well-known institutes. So here, the University of Texas, they have patent on text message technology. We all are using the text message. You might have sent one, text of good morning, or recently might have sent an happy Sankranti or happy Republic Day. Those text message, basically a technology, is patented by University of Texas. That is an academic institute there in US. And without their permission, mobile companies like Motorola and other 30 companies started using that technology. Then University of Texas filed the case against those companies, and they won the case. So what is the message to all of us here? That what I said, one invention, one patent, one industry. So here an university is created a separate industry, and by creating a monopoly right over their inventions, over their patent, and there you can understand the significance of patent. So, and that's the message to all of us here, that why we need to understand the patent, why we need to understand the procedure of the patent. Because once we understand the patent, once we understand the intellectual property in general, once we understand the procedural aspect, I think that will create an impact to increase the more number of patent in India, and ultimately more industries in India, and ultimately socio-economic growth of India. So that is what you have to understand the equation or flowcharts. Here is the most recent report on review on intellectual property rights submitted to Government of India, where you'll find where we stand. And I've decided to discuss all these recent happening in the beginning itself, so your mind will be prepared to do something great for our nation, and that's the reason behind that, sharing all facts and figures to you people in the beginning of the session itself. So here, this is a recent submitted review report on intellectual property right, more specific talking about the patent. You will find the comparison is made with the USA and China. So here, China, they are filing more than 14 lakhs patents. So on an average per month, 1,20,000 per day. Further, you can divide that into 30. That 30 days on average, you can say. There you will find 4,000 patents per day, where India 56,000 out of that 40,000 from these things from foreigners. So 16,000, 20,000 even. So if the total 5 days, pi is the 365. That is the ratio right now. So we have 5 means 20,000, and they have they have 14 lakhs patents. So just imagine what is the percentage ratio, not 1% that we are comparing with the China. So how fast they are taking patent to the next level, and that's the concern. So similar thing for the other intellectual property right, where you find 78 lakhs per day. If you calculate, then 24,000 per day China is filing a trademark, and we have hardly 1,000. So where we stand. Then again for the design, again engineering background, agriculture inventions last 5 years, we have only 7 patent granted, and that is very sad scenario. Engineering people should come forward, and I hope last week you might have heard that drone is playing an important role in Indian agricultural sector, and government is also very supportive in that manner. Up to 10 lakhs they may support you for the drone creations and various technological inventions which is required in the agriculture sector. So that's why I've decided to discuss this, because there are very less number of patents in the agri-related sectors, and if we are not helping the agri sector with the technology, I think tomorrow we'll have to depend on the
foreign agri products. Even, I mean, you are requested to read about the various import policy published by the government of India, where you will find even 2 months ago, they declared the notification where they have mentioned that for another 5 years, we will import 1 lakh metric ton pulses, particularly dal, in India to fulfill the need. I don't know how many of you are aware of the fact that the rajma, what we are eating right now, they almost 90% rajma is imported to India to fulfill our need. So we do not want to be depend on the foreign product, foreign agri product, and there are a number of issues with agricultural sector, and I think you people, you all engineering people can come forward and support the cause. We have a n number of success stories, but I will not spend much of time on that. This is what patent we have filed for these two ladies, and they are from Pune. They are utilize their patent for creating more employment revenue to the government. This patent is related to the rose wine, and they have acquired 11 acre land nearby Pune and started growing the roses. So this is what a number of stories would we have. I'm not going to talk much about that. You can click on Google and read many stories on our site on patents. So now coming to the point here is that why less number of patents filed in India? That's a reason for less number of filing in India. There is one of the reason, like we are very less amount of expenditures on R&D sector, which is very important, and we I think need to increase increase percentage of R&D where I think that can be connected. Since you have an innovation cell, you have a separate center for that. So here you can request the government. Your I think institute is running by the Ministry of Education, where you can request them to support the R&D for the students, and then create more and more intellectual property right. I'm not going much over. Again, that's here is the scenario on Indian side, particularly on intellectual property right, called geographical indications. There you'll find hardly limited number of GIs are examined, and that's very sad. I think that's the concern. This is a global scenario in GI. They have 59,000 totally GIs, and in China they have. Sir, sorry to disturb. I think slides are not moving, sir. It's moving from my side, sir. No, I think it is slide number 2 only. It is getting displayed for us. Are you on slide number 2 only? No, I reached to slide number 5. Is this? No, slides are not moving for us, sir. Yeah. Now it is there. Yes, I think that that technical issue is with respect to that not to share the complete screen, and then I have shared n number of more than 7 slides so far. But I'll quickly move. This was I discussed one Times of India report. Then I discussed about the Motorola. This slide is there. Then I discussed this is a recent report on review report to submitted to Government of India. This is a patent scenario. Now it's visible, sir? Yes, sir. Now the slides are moving, sir. Perfect. Yeah. Sorry. Yeah. But someone requested me to have the complete slide. I think that's the concern. But anyway, these are the report which I have shared in the beginning. So how 1,20,000 per month China is filing, and India is hardly 300. That is what the scenario is all about. And this is about other trademark. And I have requested about the agri innovations. Here are very less number of patents are filed in India. This is a success story on the patents. N number of success stories are there. You can click either my name or our stories at Google. You will get the many stories. Now I was here. Why less number of patents are there? The research, R&D, and your center can request and can support the students for their project and can get more patents and can lead the number of patents in India. So then I lastly request about, inform about the geographical indication. And I was here that worldwide China, they have 7,000 plus GIs. We have hardly 370 and 112 only in agricultural sectors. 59,000 GIs, again, this community's intellectual property right is there in Europe, but we have 370.
This is a sale value. Basically, during the pandemic, 75 billion euros is the sale value of the GIs uh, from Europe, and 15 billion euros is alone from the exports. Now, I'm coming to the most significant data, which is actually submitted to the government of India. Even 1%, this is actually OECD study. This is OECD is a think tank in Europe, which narrated the figures. Even 1% of the trademark protection is increased, then that will affect the 3.8% of foreign direct investment increasing. Even 1% of the patent is increased in India, that will affect the FDI by 2.8%. So, and another intellectual property very important to the academic sector is even 1% of the improvement in the copyright protection, that will affect 6.8% of the foreign direct investment. So just imagine like how intellectual property is contributing to the economy, and I think such kind of workshop is very important. Now coming to the patent, significance of patent. You all are from the engineering background. These companies are well known. You are requested to see their portfolio and in patent, how they are increasing their revenue, how they are sustaining, not only sustaining but growing with the help of the intellectual property right in general and patent in particular. So this is an IBM where they are spending millions and millions dollars, and they are generating an intellectual property. Further, they are taking the intellectual property to the masses. Friends, intellectual property right, in fact, are the new subjects to all of us. Here, our day start with someone's intellectual property, our day ends with someone's intellectual property right. I'm not going to talk much on that, but your toothpaste, there you will find the name, maybe Colgate, maybe Pepsodent, maybe Patanjali, maybe Vithoba. That is trademark. And again, your day ends with certain someone's intellectual property right, maybe Kurlon mattresses and etc. And I have started with a slide called the particularly University of Texas patent. Here, you are paying at micro level, but at macro level also you are paying a huge amount. Maybe your what we can say, the PowerPoint presentation right now I'm giving is as an intellectual property right of Microsoft, where you and me, we all have paid a huge amount for this technology. For an example, 5,000 rupees is a you can say license fee, which they might have taken from you as well as from me. So just imagine if we have 100 participants, how much we have paid for the single same Windows 10 or PPT and etc. 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 So friend, what is the message to us at micro level and macro level on patent? On in general, we are paying a huge amount. For text message, I have an economic aspect for you all. Like okay, again 100 those we are having 100 participants. So go back say 10 years ago, and you can recall yourself like we had this message message per 30 message per 100 rupees, or 100 message for 30 rupees, sort of an advertise you can find. And that's how we have paid for someone's intellectual property right. Let me tell you, the big MNCs like Monsanto, for their BT cotton, they took thousands of crores rupees from India as a royalty. Then there are n number. We all are eating the strawberries, but I think you all are not aware of the fact the strawberry plants are patented there in US, and we are paying huge amount of royalty to them to export their strawberries to Mahabaleshwar and then cultivate here. So this is a significance you have to remember when you will start working on the patent, when you'll know that there is a significance on the patents, where there is a industry created for the patent, and that's the concept. At national level, you can see this is an excellent example. They have 40 million jobs on intellectual property right in US. They have contributed 34.8% of their GDP, is basically $5 trillion. If you remember 3 years ago, our finance minister said by 2025 we will be a 5 trillion economy. However, 5 trillion economy is the contribution there in US through the industry innovations, through the intellectual property right.
where you'll find over 50% of the total patents are filed there in industrial innovations are having an Indian brain. So if you compare this report of IIM Ahmedabad with the US report, you will find more than 70% contribution in the GDP in US in the United States have Indian brains for their industrial innovation. So they may work for the IBM or big MNCs and they file the patent. So the first rule of procedure of the patent you'll understand here itself. In due course of an employment, whatever you invent, that will be the intellectual property, that will be the patent of your employer. So if you are working in IBM and you have uh, applied, if you have invented something unique, then and if you apply for a patent, then IBM will be the owner of that patent and you will remain as an inventor. So we will be discussing that, who is applicant, who is owner of a patent, and here is the first message like, okay, if you invent something for IBM, IBM will be the owner, you will remain as an inventor, you will have no economic rights over that patent. And that is what had happening there in US. A number of engineers who came from India, they invent something for the US company, and US company will take the advantage by taking those inventions to the globally, and that's how they work. And they have established many R&D centers and all in India. Now these are the some of the interesting examples of patent and other intellectual property right, where I would like to convey the significance of IP in general and patent in particular. Because my intention behind giving all these examples in another 15, 20, 30 minutes, that to understand the importance, to understand the significance of patent and in business perspective, so you will start working on that and you'll get an idea this is happening there globally, and then that can be happening to your individual level. So first example here I'm giving is this Microsoft SPY patent application. So I have already mentioned in the beginning itself that Microsoft, IBM, all big MNCs are filing huge numbers of patent in lakhs and lakhs. So one of the patent filed by the Microsoft is a SPY patent application. So this patent application actually to observe your activity, to record your activity, to provide the report on your activities if you are working with some companies. So it will work like automatically like your PPT or PowerPoint presentation or your Windows. So as soon as you starting working on your desktop, this application will work. As I mentioned, that it will record your activity. It will provide the report on your activities. So if I'm visiting say XYZ website, this my activity will be recorded by this software, and then they'll provide the report as and when I want, or my employer want to have the reports on me. So here one student's got the placement. He joined one company. That company gave a project to him. He started working on the project. He actually reached at office 9:30. From 9:30 he started working on the project up to 10:10. He worked on the project given by the company. Then 10 o'clock he started visiting various matrimonial websites. So he continued because we have a lot of matrimonial websites, and then he continued for a search up to 4:30. And suddenly he realized no, he should go back to his work. Before he shifting to work, he found his friend online. So he started chatting with his friend, and likewise the whole day went. The whole month went like similar way, and at the end of the month he went to the ATM machine to withdraw the salary, and he found there is no sufficient balance. Then he took the mini statement and he found company only deposited 2,500 rupees to his account. With angry mood he went to the manager and said, what this nonsense, I supposed to get the 25,000 rupees salary, but I found only 2,500 rupees deposited to my account. So
Then manager is a cool man ready with two reports. One is a spy software patent report, where he got a letter from the company that you dear sir, you have been hired for working this project. You are supposed to work for the 100 hours for the project, but you really spend only uh, only 10 hours for the company's project. For 75 hours you spend visiting various matrimonial websites. Into bracket they mention the detailed report will be available on request, and another 15 hours you spend on chatting with the friends. So you are only work for the 10% of the company's project. So you are only entitled to receive the 10% of the salary. This was the spy software patent reports. And then is another report the manager issued the boy, that was corporate, what we call corporate prem patra, and legally we called it as memo. If you work like this, you will be out, and you'll have to compensate for the utilizing the company's infrastructure and sources. So here is the message to all of us with respect to this patent. We have a religious thought: do your duty, God is watching you. It has been replaced now with do your duty, patent is watching you. And there you can understand the significance. Then of course I have already mentioned in the beginning, like one invention, one patent, and one patent industry. I request you all to study the Tata Nano Sporty patent, where you can see that how many employments has been generated, how much revenue has been generated, how they invented single wiper system. All the procedure of the patent start from here. Necessity is the mother of invention, that we all know very well, and we will discuss that this in the second phase, like how necessity will create an inventions, and that invention can be converted into the patent, and patent can be converted into the industry. There is not necessary like, okay, you need to have science background, engineering background, and then only you can be an inventor. No, like I'm going to share the many number of example where they are not even 10th pass inventors there, but they created excellent inventions on that. And that's the things. So I'm not going to talk much about the copyright, which you are quite very well aware than, but here is the example. You can see the significance. The author of Harry Potter is earning more than the Queen Elizabeth because of the copyright. Bill Gates also richest man because of the copyright. This is an example of GI called Tirupati Laddu. In and on trademark fund, these are the various cases you can refer. McDonald or Infosys or yoga patent. Yes, yoga patent and dosa patent. I think some of you may only aware of the fact only scientific inventions can get the patent. No, that's not the case. I have mentioned that rose wine. The lady started with Gulkand, and now she is patent holder for the rose wine. Similar, you can read about the Chiranjeevi dosa. You can also read about the Bikram Batra's yoga patents. Hundreds of patents you will find dosa and yogas are available. So how they acquire the patent? On what basis they have acquired the acquired the patent? Those things you can read in details, and also refer my many these things. Now, I think before we move to the again for the procedural aspect, that's the career opportunities to the engineering students, science students in patents are huge. We have only 2,500 patent agent. Any science background student, any engineering background students can be a patent agent. There is no age bar. Only you need to have science or engineering degree, and once you become a patent agent, you can practice in patent office. That is the biggest opportunity available to all of us. In May they are conducting the patent agent exam after 2 years. So you think, but I think the application procedure for the patent agent exam is finished. Is that the deadline is already gone? But you can think about the patent examiner as is a class one post. It's a scientist A grade, and directly salary is from Ministry of Commerce and Industry. And you have to be a engineering background students. If you have any foreign language certificate, that's an additional advantage.
You'll have to practice, and there you'll find the procedural aspects of patent finding is useful. You can get similar salary like what collector is getting for his post. So that you have to remember about the career. So I thought 2 minutes I need to spend on that. What is the benefit of understanding procedural aspect? These are the examples. Like IIT, they have they are filing many patents. So them some of the patent is available over here. So IIT Madras, I'm going to talk about their various inventions, about the dewdrop technology, about the Vayu gel. You can click this dewdrop or Vayu gel. Vayu gel is the well-known technology which received the patent. Likewise, IIT Mumbai students invented many products and applied for a patent. Similar trend can be replicated to your institutes. They then amongst the various inventions or patent, one of them is a shield which can be used by the pregnant woman during their pregnancy period. And nowadays, pregnant women may have to work up to 9 months. So in this situation, what is the solution? Their babies are need to be safe, and hence these IIT Mumbai students invented the shield, which she can use during the work time, and then that will save the baby. So, what is the message to all of us about the patent here? Patent, I have already said, procedures start from the necessity. So, necessity is the mother of invention. What is the significance? We have discussed a number of significance to the nation, significance to the individual. The third important is you have to solve the problem of the society, and there you can identify the problem, you can work on the pattern, you can work on the problem, and then solution is the intellectual creation, and then entitled for a patent. So here that is the basis for each and every invention. You can see the another examples of patent holder as a from Jaipur. Six player can be play a chess if you have a six member in the family, and if you two are only working in the chess. So what about the other four? So this boy solved the technical problem, and then 6% canvas. Another boy from the JD Goenka school there in New Delhi, he invented anti-molestation device. Since you all are from Pune, you can recall one incident happened there in Hinjawadi. Some working woman had faced a very sad incidents, and जो basically समाज कंटक है, उन्होंने उनके साथ क्या बुरा किया आप लोगों को शायद वो पता है. So such things should not be happen. So one boy worked on that, and he developed an anti-molestation device which you can fit it in your watch. 122 rupees is the cost. कोई आपको तकलीफ दे रहा है, आप जोर से उसको पुश करो, then there will be उसको करंट बैठेगा और फेंक दिया जाएगा. So that is actually you are solving through your invention, through your patent, you are solving the society's problem. And ये इन्वेंशन वो बताता है. कार्ड हियर इन योर मोबाइल, अनदर ऑफ इन्वेंशन फ्रॉम इंडिया. मैंने पहले ग्लोबल सिनेरियो दिखाया था जहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन इंडिया का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दमदार है. तो ये देखो कार्डियोग्राम आपके मोबाइल में, आपको पता चलेगा 8 घंटे पहले कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है. वो पता चलने के बाद ना आए ये वाला कंसर्न है, लेकिन इसका मीनिंग है कि आप अपने आप को इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके जाओ और प्रिस्क्रिप्शन ले लो. So that is what the invention. So here is the excellent invention by the Ganesh ji. And then of course a number of examples like a zero invention you all know from India. We have already discussed the IIM Ahmedabad report that foreign companies में जो US में फाइल हो रहे हैं उसमें से इंडियन ब्रांड्स हैं ज्यादा. बच्चों क्या कर सकते हैं? Once you understand the invention, necessity is the mother of invention. So then you can solve this society's problem. Cell phone batteries can be recharged in 15 minutes. I think I have आप लोगों को पता चल गया है
और 10-10 दिन वो चल सकता है। दिस इज एन एक्सेलेंट इन्वेंशन। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, गांव-गांव में अभी भी लोड शेडिंग है, वहाँ पे सच काइंड ऑफ इन्वेंशंस आर हेल्पफुल फॉर कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक अ मोबाइल। देन अबाउट कॉपीराइट केस, एक मैं जानबूझ के यहाँ पे रखा हूँ कि यूके में एक स्टूडेंट यूएस की म्यूजिक को डाउनलोड कर रहा था। यूएस की म्यूजिकल कंपनी थी, उसमें म्यूजिक था, उसको ये बच्चा इलीगली डाउनलोड कर रहा था। तो उसके अगेंस्ट केस यूएस में दाखिल हुआ। फेडरल कोर्ट ने गवर्नमेंट के माध्यम से यूके में से वो बच्चे को ट्रायल फेस करने के लिए यूएस में बुलाया। आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस केस एंड देन वन स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, और मैंने कहा कि भैया इतना सीरियस केस में बता रहा हूँ, आप क्यों हंस रहे हो? सो वो कह रहा है कि सर ऐसे माध्यम से भी हम लोग यूएस जा सकते हैं क्या? सो व्हाट अ क्रेज, मैं क्रिमिनल बन के चलने के लिए तैयार हूँ, यूएस में जाने के लिए तैयार हूँ। दैट शुडंट बी द अप्रोच और एटीट्यूड। सो दिस प्रोफेसर लोगों के लिए बहुत बड़ी मायने रखता है पेटेंट। ये है यूके के एक प्रोफेसर ने, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की लेडी प्रोफेसर है, उन्होंने एक आइडिया बनाया था कि ड्रिंकेबल वाटर को बनाया जाए फ्रॉम टॉयलेट वाटर, एंड देन शी सक्सीडेड ऑन दैट। शी गॉट द हेल्प फ्रॉम द बिल गेट फाउंडेशन, and invention is now available to the public for exploitations. Then what is in United States और यूके में आप देखोगे तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ रेवेन्यू उनका आईपी वेंचर से जनरेट करते हैं। दैट इज अ मैसेज टू ऑल ऑफ अस। नाउ माय कंसर्न, अगर आप नहीं समय पे पेटेंट प्रोसीजर समझ पाओगे तो क्या हो जाएगा? आप एक तो पेटेंट नहीं फाइल करोगे, जिन्होंने पेटेंट फाइल किए हैं वो आपके तरफ आएंगे और आपके जॉब लेके जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपनिंग विद द वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने काफी पेटेंट ऐसे रखे हुए हैं कि जो अभी आपके पास जो जॉब आ रहे हैं वो आपके जॉब जाएंगे, इंक्लूडिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी के लेके सब कुछ। सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर रिवोल्यूशंस थ्रू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये कुछ सिग्निफिकेंस के जरूरी है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि walnut 6 drone each to manage food supply applies for 46 patent. Amazon wins the patent of robotic arms. These are the recent patent filing of the foreigners के point of view से हैं। ब्लैकबेरी जैसी कंपनी फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के अगेंस्ट शूट कर रही है। सैमसंग का पेटेंट से इट्स आइरिस रिकग्निशन बायोमेट्रिक कैमरा में टेक एप्पल्स टू द फेस आईडी। इंडिया लीड कर रहा है। हम लोग गौमूत्र के लिए पेटेंट यहाँ से लेके बाहर जा चुके हैं। ये मैंने ड्यूड्रॉप टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बताया कि हैदराबाद के ये बच्चे ने once he understood the importance of intellectual significance of intellectual property, more importance on patent, he started working on that and he developed a technology dewdrop। हवा से हाइड्रोजन पानी इकट्ठा करके उसको इन्होंने ड्यूड्रॉप टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्रेश वाटर हवा से बनाने का शुरू किया। देन मैंने कहा कि हम लोगों के पास कम है लेकिन दमदार इन्वेंशन है। ये आर्टिफिशियल ब्लड इन्वेंट किया है आईआईटी मद्रास के बच्चों ने। They found the figures that India needs 12 million unit bloods, but only collect 9 million units annually. So they started working on this project. Then they found there is an artificial blood which is possible, and then they invented. तो हमारे लोगों ने, बच्चों ने, in short पानी artificial blood जैसे invention के लिए काम किया। Now you all are engineering background, you know very well that artificial intelligence will play an important role. So again IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपका पर्टिकुलरली डायग्नोसिस वो फटाक से किया जाएगा। आपको जो समय लगता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन, वो कुछ घंटों में आपके पास इमीडिएटली उपयुक्त होगा। ये डायग्नोसिस का टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ IIS। Now coming back to the Indian scenario, India is at bottom. We do not want that to be the India's place. India should be at top. On academic front, India is nowhere. On intellectual property right, on patents since 2002, we wanted to make India at top level, and that's the things. ये कुछ हमारे यहाँ की R&D organization अच्छी काम कर रही है, but again good is enemy of great as compared to, we have discussed in the beginning itself कि बाहर चाइना में
15 लाख पेटेंट फाइल हो रहे तो हमारे यहाँ पे 15,000। सो दैट शुड नॉट बी द केस। 15 लाख कहाँ पे और 15,000 कहाँ पे है? जहाँ पे 15,000 हम लोग उस महीने के भर रहे हैं, वहां पे 15 लाख महीने के जा रहे हैं। इतना डिफरेंस नहीं चाहिए हमें, 100% से भी ज्यादा। और इसीलिए कुछ हमारे लिए ऐसे वाली इनिशिएटिव जरूरी होगी जहाँ पे हम लोग पेटेंट के बारे में जाने, जहाँ पे हम लोग इंडिया के सिचुएशन के बारे में जाने, और जहाँ पे हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं। आईआईटी ठीक कर रहा है, लेकिन अगेन गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट। यूएस ने डिक्लेयर किया हुआ ग्लोबल इनोवेशन रैंक्स में आप 45 में 43rd रैंक पे। अगेन वेरी सैड, हम लोग बॉटम पे हैं, हमें टॉप पे आना है। नाउ यू ऑल, क्यों आप पेटेंट जाने, क्यों आप पेटेंट की तरफ जाएं? तो एक अपॉर्चुनिटी भारत में क्रिएट हो रही है, वो है आईपी एक्सचेंज। मतलब आप जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वहां पे अपनी कंपनीज डालती है और वहां पे इन्वेस्टमेंट आता है, वैसे ही आप अपना पेटेंट एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस एक्सचेंज में डाल सकते हो। और आपके इन्वेंशन का पोटेंशियल ग्लोबली कितना है, उस हिसाब से उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और आपको आपके अलावा बाकी जनरल पब्लिक और देश को ओवरऑल बेनिफिट हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ड्यू ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हैदराबाद के बच्चे ने की है और वो टेक्नोलॉजी को हम लोग आईपी एक्सचेंज में डालते हैं, और वही टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत अगर साउथ अफ्रीका में है और कोई इन्वेस्टर्स वहां पे ये टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, तो इस एक्सचेंज के माध्यम से वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ेगा, देन स्टेक लेगा, और स्टेक के माध्यम से वहां पे वो रिक्वेस्ट करके वो टेक्नोलॉजी वहां पे पहुंचा सकता है। सो दैट इज व्हाट एन आईपी एक्सचेंज विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। हम लोग, ये आईआईटी मुंबई है, ये आईआईटी खड़गपुर में मैं गया था, वहां पे हम लोगों ने पेटेंट ड्राइव, जीआई ड्राइव ये लॉन्च किया। हम लोगों ने 100 पेटेंट का हमारा टारगेट रखा। पहले हम लोगों ने सिग्निफिकेंस, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, पहले एक आधा एक घंटे में, वैसे हम लोगों ने अंडरस्टूड किया। फिर उसके बाद ये पेटेंट ड्राइव 2016 में हम लोगों ने शुरू किया। 2018 में ये पेटेंट 100 पेटेंट पूरे हो गए। 19 में यही पेटेंट ने काफी करोड़ वैल्यूज वहां के इन्वेंटर को मिलवा के दे दी। वैसे ही मॉडल आपके पास हो जाए। बिफोर अंडरस्टैंडिंग योर पेटेंट, you need to understand the significance, you need to understand the importance, you need to understand how this can be used as a tool for your as well as country's growth. So ये पेटेंट, और इसके माध्यम से एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी वहां पे अच्छी तरह से स्ट्रेंथन हुई है। जैसे कि वैसे पैसे आ गए वहां पे, उन्होंने वही पैसे बाद में जो नीडी बच्चे उनकी स्कॉलरशिप के लिए, जो R&D रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए, जो मैंने आगे कहा कि हमारे यहाँ पे लेस पेटेंट क्यों है, R&D के लिए खर्चा कम है एज पर द रीसेंट रिव्यू रिपोर्ट। तो वो वाली बातों के लिए हमें करना है। और आई थिंक दैट इज द परफेक्ट मॉडल द IIT खड़गपुर इंट्रोड्यूस, एंड आई थिंक दैट शुड बी replicated to other institutes in India. ऐसे ही मैंने शुरुआत की थी, ऐसे ही पार्टिसिपेंट, ऐसे ही प्रोफेसर थे वहाँ पे। अभी हम लोग ऑनलाइन है, वहाँ पे ऑफलाइन थे। ऐसे ही रिसर्चर्स और स्टूडेंट थे, सीरियसली उन्होंने अटेम्प्ट किया था, एंड देन फॉर्चुनेटली वी सक्सीडेड। देन ऑफ कोर्स वी वेंट टू द गुजरात, वी टुक all IPR to the Rajasthan, then Gujarat, then continue with the all over. More than 70% India is covered. Now impact of this, हम लोगों ने पहले पेटेंट अवेयरनेस, फिर प्रोसीजर, ये बताने के लिए हम लोगों ने जो प्रोसेस की थी, उसमें का आउटकम था कि ये बच्चा, ये पूना का ही एक डिप्लोमा का बच्चा था, he understood that and he came to us, and then we have filed his patent. His patent is electric foldable bike. You can fold his bike, and then can be utilized. Now you know electric का जमाना आ रहा है, लेकिन पायनियरिंग जो एफर्ट्स थे वो इस बच्चे ने 2012-13 में किए थे। आफ्टर लिसनिंग आवर दिस थिंग्स, दैट इज व्हाट हैपेंड टू दिस थिंग्स। ही इज फ्रॉम पुणे एंड यू कैन सी हिज बाइक। सो दिस इज अबाउट the other intellectual property। हम लोगों ने पूना से 2007 में रजिस्टर की थी, and now become a symbol of intellectual, symbol of heritage, that is a Puneri Pagdi, and we need a lot of technology to support this on geographical indication. With this, the first part about the significance is covered.
I have intention behind this, like to understand the importance of intellectual property, significance of patent, various interesting examples. Academically, you can utilize the patent as a tool, and that is what had happened there in developed countries and can be replicated to India. Now, I would like to move to the another presentation, and I'll close this. Is there any question till ये 45 स्लाइड के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज अभी हम लोग डिस्कस करें बिफोर आई मूव टू द टेक्निकल सेशन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ पेटेंट प्लीज. I think participants can paste their question in chat box. At the end, we can take the questions, sir. ठीक है. Okay. Sir, can you see the my other presentation, sir? Yes, sir. Yes. Now we are going to the procedural aspect. That's a technical session. It's absolutely a needed session, and we have discussed about the IPR. I think you have already have a session on intellectual property right. I'm not going to talk about that. What is copyright? What is trademark? That is already been covered probably by your authorities, and we have discussed some of the interesting examples. Now, let me start the pre-patent filing stage. First, you'll have to remember patent is an intellectual property right. We have a law pertaining to the patent, that is the Patent Act 1970. That 1970 Act is incorporated with international scenario. What is international scenario? Internationally, you'll have to remember two main aspect, or rather areas. One is international organization, second is international treaties. India is a member of various international organizations called World Trade Organization, World Intellectual Property Organization, and India is also signatory to TRIPS agreement. That is a TRIPS full form of the TRIPS is trade related aspects of intellectual property right. India is also member of Paris Convention, which talks about the industrial property. So because of that, India amended its law in 1995, thereafter in 2005, and today we have amended version because India is the member of WTO, WIPO, signatory to the TRIPS and Paris Convention. I repeat, friends, those who are appearing for the patent agent exam or going for patent examination, or the third last one is if you are preparing yourself for the patent filing, then you should know the background of the Patent Act in India. The Patent Act is basically incorporated with the help of various international assignment, and but the common you can say the common factor is a mother of invention. Patent is an invention and necessity is the mother of invention. So when you will invent mostly you will find this कि जब आपके मन में कोई प्रॉब्लम सता रहा है, this is in fact nothing but the prerequisite you can say, or pre patent filing
अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस इन्वेंशन। आपका पेटेंट कब बनेगा? जब आपका इन्वेंशन बनेगा। आपका इन्वेंशन कब बनेगा? जब नेसेसिटी होगी। I'll tell you the most important facts right now only. दुनिया में 97% इन्वेंशंस इम्प्रूव्ड इन्वेंशंस है, केवल 3% इन्वेंशंस ये ओरिजिनल इन्वेंशंस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रेलवे इंजन का जब इन्वेंशन हुआ तो वो 12, 15, 20 किलोमीटर पर आवर दौड़ती थी। आज बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर पर आवर दौड़ रही है। सो दैट इज व्हाट इम्प्रूवमेंट। जरूरत के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करना जरूरी होता है और उसको हम लोग नया इन्वेंशन मानते हैं और उसको पेटेंट के लिए जाते हैं। सो पहली वाला मैसेज आप लोगों के लिए विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंट इज always scope of improvement that leads to the invention. That invention is patentable and you can cross licensing that. So ऐसा नहीं है कि आप पहले ही रेलवे का इंजन हो चुका है और बुलेट ट्रेन हो चुकी है, आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। नहीं, आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन लीड करेगा पेटेंट। अगर उनको जरूरत है तो वो आपके पास आके जाएंगे। एंड आई हैव गिवन हियर इज एन एग्जांपल। In my previous slide, I have mentioned कि particularly आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, आपको मन आपका संशोधक होना जरूरी है, तब आपके इन्वेंशन बनते हैं। और वही से आपकी शुरुआत होती है कि आप अगर खुद कन्विंस हैं तो आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप को खुद को लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है, इन्वेंटिव है, तो आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हो, इंक्लूडिंग पेटेंट ऑफिस। सो नाउ दिस इज द बेस्ट एग्जांपल and I have written an article series on such thing. You can get those article series as a patent katha from Saptahik Sakar. So where I have covered 20 inventions from our side, जो उसको कैसे पेटेंट मिला हुआ है, कैसे नेसेसिटी थी और कन्वर्ट हुआ है इन्वेंशन के माध्यम से। So this is in Marathi in fact, but you can read as and when you get. That includes this story of Shubhangi Patil. शुभांगी पाटिल ये पूना की महिला है और उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था एंड द डॉक्टर एडवाइज टू ईट नॉन वेज बट दे रिफ्यूज। उन्होंने कहा कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मैं महानुभाव पंथ का हूँ। और देन शी वॉज इन डायलेमा। सो उसने अपने घर में गैलरी को लैब बना दिया कि जो घटक नॉनवेज से मिलते हैं वो मैं दूसरी कौन सी वेजिटेरियन फूड से बनाऊं और अपने हस्बैंड को दे दूं। एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। उसी गैलरी के माध्यम से बनाया हुआ लैब के बाद में उन्होंने वॉलनट रागी सूप के माध्यम से कन्वर्ट किया। उससे उनके हस्बैंड की रिकवरी तो हुई, बट उन्होंने सोचा कि अगर मैं यही वाली प्रोडक्ट अपनी आर्मी को बॉर्डर पे दे दूं तो क्या होगा। एंड देन शी स्टार्टेड गिविंग दैट टू military, and now she has got another woman entrepreneurs, and the volume is 150 crores now for their business. So what is the message? Please remember, the entire efforts of my conveying all these is number one, necessity आपको जाननी जरूरी है। Necessity is the mother of invention. Then once you have an invention, you can go for a patent. Once you have a patent, then you go for an industry. Now I'm going back to my international assignment statement. What is that? India is a member of WTO. India is a signatory to the Paris Convention. India is a signatory to the TRIPS agreement. So what Paris Convention and WTO? WTO trade के बारे में दुनिया की बोलता है, you can take your intellectual property to another place. What we did in our first, कि हम टेक्स्ट मैसेज जो पेटेंट हुआ है यूएस में, वो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रॉयल्टी भर रहे हैं। सो दैट वे यू कैन टेक योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रॉस बॉर्डर। क्यों? क्योंकि पेरिस कन्वेंशन है, क्यों ट्रिप्स एग्रीमेंट, क्यों डब्ल्यूटीओ है, क्यों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे आपकी कमिटमेंट है और आप आपको लेके जा सकते हो। सेकेंड, दुनिया में भी
इन्वेंशन हो रहे हैं और हम लोग, लेकिन हम लोग एक्सपर्ट ज्यादा हो रहे हैं, हमारे पैसे बाहर ज्यादा जा रहे हैं. We'll have to stop that, and we will have to work together with all knowledge and all, I think, efforts and all these things. So ये बिजनेस लाइन में बड़ी न्यूज हमारी आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हो कि हाउ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इज द प्री रिक्विजिट फॉर पेटेंट. मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल के माध्यम से आपको प्रोसीजरल एस्पेक्ट का पहला मैसेज दे दिया है कि नेसेसिटी ढूंढो, उसके ऊपर इन्वेंशन शुरू करो. नाउ माय थर्ड सजेशन इज स्टार्ट इन्वेंशन डायरी. हमारे यहाँ पे पेटेंट कम गिरने की एक और भी वजह है कि हम लोग उसको रिकॉर्ड में नहीं लाते, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते. सो पेटेंट प्रोसीजर की सबसे बड़ी प्रोसीजर स्टार्ट होती है जो आपके एक्ट में नहीं लिखी है. ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपके कहीं पे भी द पेटेंट एक्ट में नहीं है, लेकिन आपको जरूरी है. दिस इज अ प्रैक्टिस टैक्टिक्स दे फॉलो देयर इन डेवलप्ड कंट्रीज, एंड दैट इज अ इन्वेंशन डायरी. समझो आपके मन में आज एक आइडिया आ गई है कि मैं ऐसा ड्रोन बनाऊं जिससे जो डीसीज अलग अलग जगह पे निर्माण होते हैं वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो फार्म में और वहीं पे क्योर हो जाए. इट्स ऑलरेडी डेवलप्ड, लेकिन उसकी समझो वो ड्रोन की वेट है या फिर उसकी लिमिटेशन है, मैं उसको कैसे इंप्रूव करूं. ये आपका मन का विचार आ गया, तो यहाँ पे नेसेसिटी आपने आइडेंटिफाई की है. उसके बाद इन्वेंशन की तरफ आप जा रहे हो, तो जैसे ही आपके मन में ये आइडिया आती है, इसको आइडिया स्टेज कहते हैं, आइडिया स्टेज आती है, उसको आप इन्वेंशन डायरी में कवर करो. आई टेल यू, अगर आपके पास इन्वेंशन डायरी है तो आपका पेटेंट ड्राफ्ट एकदम सुपर डुपर बनता है. आपका इन्वेंशन बाद में रेडी हो गया और आप उसके लिए पेटेंट के लिए जा रहे हो तो उसको समय बहुत लगेगा. अगर आपके पास इन्वेंशन डायरी नहीं है, आपको इमीडिएट बेनिफिट लेना है, तो यू स्टार्ट विद द इन्वेंशन डायरी. और जहां पे ये वाली सिंपल थॉट है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, को लेके आप अपनी लैंग्वेज में लिखो. फॉरगेट अबाउट द पेटेंट ड्राफ्ट. पेटेंट ड्राफ्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेटेंट एजेंट, but he need an entire background. How idea came to your mind, how you developed the idea, whether that idea is converted into the material form or in any invention form. I repeat, how you, this is a prerequisite stage of patent filing. How an idea came to your mind, what is the necessity about your, you know, the inventions or your idea to convert that. Where did you reach? Where you have alpha testing, whether you have beta testing, whether you have some supportive scientific evidences. If you have that, then you can file patent, and patent agents will very happy to work with you on certain techno-legal document that is called as a patent specification. The techno-legal document is a patent specification. Now, let me first again go back to the idea stage. Some of you may have an excellent idea and you have to go for a test, maybe alpha test, beta test, whatever test required to support your invention. In that case, you may have to take your idea to the outsource. And then there is a fear that someone may take your idea and then can file a patent. In such scenario, before going to third party, you must file provisional specification. I repeat, you must file a provisional specification. This is a kind of a provisional patent. At idea stage, you have identified, and this is a worth idea you found, and then you can straight away file a patent application with that idea. That is a provisional specification. You can block your idea, and there is a provision Sir, in the sorry patent. to disturb. Again, slides are not moving, sir. You are on slide number 5, is it? Yeah, I'm in slide number 5 only, sir. Okay. Sorry, sir. I'm explaining the necessity of the inventions and then what are the prerequisites, and before I go to the forms and see.
So Okay. that Okay, सर okay. आपल्याला किती वेळेपर्यंत आहे? 1 वाजता ब्रेक आहे ना? As you can decide, sir. नाही, आपण ब्रेक घेण्याच्या ऐवजी सरळ सरळ 1.5-2 वाजेपर्यंत सगळं संपूयात का? हो, चालेल चालेल चालेल, अगदी चालेल. येस सर, येस. म्हणजे माझ्या मिसेसला बोलवायलाच नको, मी संपून टाकतो तो सगळा हो प्रोसेस. सर, हो हो, चालेल चालेल. आणि ब्रेक घेऊन करण्यापेक्षा ते हो 1:30-1:45 पर्यंत संपून जाईल हो, सगळं. चालेल चालेल चालेल. So, sorry friends, my message here is about the idea stage. Idea stage, if you are not taking your idea to the testing level or converting material level, then immediately you start writing on that and then file the complete specification. However, you must have invention diary. You give that name to the diary, invention diary. So first, what you have to write, the idea came in my mind on this date. Then second, when you started working on that idea. Third, how you are converting that idea into material form. I'm giving an example of drone. Drone idea came into your mind that we are suffering with this, and drone is helpful. This is just an idea. So you start writing on that. Then you collect all information, what is the recent available drones and etc. And then how your idea is a worth notable, and then accordingly you start. Doesn't matter if your idea doesn't matter if your this development is giving big writing, maybe 200-300 pages, no worries about that. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आपकी इन्वेंशन डायरी 200 पन्नों की बने या 500 पन्नों की बने. But you please write on that. This will help the patent agent to draft an excellent patent for you. आपके पास डेवलपमेंट होती है वो, क्योंकि बाद में भी even you file a patent and if he raise any issue with respect to your patent, then also your diary will be very helpful. कहीं पे भी आपके पेटेंट एक्ट में डायरी बनाओ, डायरी में लिखो, डायरी में कन्वर्ट आपकी आइडिया करो वगैरह लिखा नहीं है. बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट where originality will be reflected, and it also helps the most important section called section 7, which talks about, particularly section 6 talks about who can be an applicant. So a true and the first inventor, I repeat, the most important requirement as per the Patent Act is concerned is a true and first inventor. जो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, ट्रू है, फर्स्ट है. फर्स्ट जिसके दिमाग में पहले आया है, बट आपके पास क्या एविडेंस है. तो अगर बाद में कोई अपोजिशन रेज करता है, रिसेंटली ओनली वी हैव वर्क ऑन वन अपोजिशन. दोनों सगे भाई बहन है, लेकिन भाई ने इन्वेंट किया था, बहन ने सपोर्ट किया था. भाई वाज द फर्स्ट ट्रू फर्स्ट इन्वेंटर था. तो उसने बाद में 6 महीना ये अपोजिशन चला. प्री अपोजिशन ग्रांट कहते हैं उसको, सेक्शन 25(1) के माध्यम से या 6 महीना अपोजिशन चला, 3-4 हियरिंग हुई, बट इनके पास हर एक एविडेंस था और सक्सेसफुली कल ही हमारी हियरिंग हुई. कल माय वाइफ वेंट टू द मुंबई एंड वी हैव एक्सप्लेन देम कि ये रिकॉर्ड थे हमारे, ये रिकॉर्ड के माध्यम से ये हमारा पहले है और ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, और दे हैव एक्सेप्टेड दैट. So what is the message to all of you here? Be careful. यहीं से डे 1 से आप अपना पेटेंट एप्लीकेशन स्मूथली बना सकते हो. बाद में टेक्नोलीगल ड्राफ्ट तो उसको कहेंगे स्पेसिफिकेशन इज देयर. However, you please start keeping invention diary. और इन्वेंशन के लिए आपने मैंने जनरल जो आपको बताया वो वाली बातों को ध्यान में रखते इम्प्रूवमेंट करना है. वैसे आपका ड्राफ्टिंग का स्टेज नंबर 1 क्रॉस होता है. सो दैट इज फर्स्ट. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड अगेन मच टाइम ऑन दैट. दीज आर आवर पेटेंट्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन, आप गूगल में सर्च करोगे तो इसके बारे में बता लेगा. लेकिन मैंने इन लेडी के बारे में जरूर आपको बताना है. जैसे शुभांगी पाटिल जी ने भी क्या करते थे, ये प्रयोग हो गया, ये वॉलनट ये सुटेबल है, ये न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहे जो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं. शी कीप ऑन ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली शी फाउंड द वॉलनट फ्रॉम द कश्मीर इज मोर सुटेबल and ragi from certain place is suitable.
उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसका एक्सपेरिमेंट, उसका सही रेशो, उसकी रेसिपी इज परफेक्ट फॉर her husband treatment, and then and then we applied on behalf of her for the patent and we received it. मैंने जो आपको बताया ये इम्पोर्टेंट स्टेज है, ये हम लोगों ने 10-15 मिनट इसी में लगाए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं कि फॉर्म कौन सा है, फीस कितनी है, ड्राफ्ट कैसे बनाना है और खत्म कर देते। दैट इज नॉट अ गुड स्टेज। एक्चुअली वो लास्ट स्टेज है। हमारी फर्स्ट स्टेज है पेटेंट प्रोसीजर की, आपको अच्छी तरह से आपकी आइडिया को आइदर ब्लॉक करो या फिर आइडिया को दिशा दे दो, आइडिया को डायरेक्ट कर दो, और वहां से ही आपका शुरुआत होती है। रिमेंबर दैट इज व्हाट हैड हैपेंड। हम लोगों ने अच्छा ड्राफ्ट इनका इसीलिए किया ताकि इन्होंने हर अपना एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से लिखा हुआ था, एंड यही वाली बातें वहां पे। सिमिलर केस ऑफ अनदर लेडी फॉर whom we work is रोज वाइन। आई हैव मेंशन्ड इन माय फर्स्ट स्लाइड। उसको वाइन वुमन कहते हैं भारत में, और पर्टिकुलरली इफ यू सी अगेन हर ड्राफ्ट, हमारा पहले हियरिंग में ये पेटेंट ग्रांट हुआ था और एग्जामिनर वाज सो हैप्पी क्योंकि हम लोगों ने वही किया था। ये लेडी ने 15-20 साल पहले जब उनके मन में आया था कि शी स्टार्टेड सेलिंग द गुलकंद। आई होप यू पीपल और नो गुलकंद। तो गुलकंद का बनाने का प्रोसीजर पड़ा, उसको बनाया, फिर सडनली द थॉट केम इन हर माइंड, आइडिया, आई सेड आइडिया केम इन हर माइंड कि चलो अगर ग्रेप्स की वाइन बन रही है, फ्रूट की वाइन बनती है, तो फ्लावर्स ऑफ गुलाब की भी बन सकती है। So she started working on that. She collected a lot of information. She started writing on that. फिर हर वाली बातें उसने ये की। फॉर्चुनेटली हम लोगों ने वो सब वाली बातों को अच्छी तरह से लिखा, बढ़ाया, एंड फॉर इसका भी हेयरिंग इतना क्लियर हुआ कि वो दोनों के लिए हम लोग पेटेंट मिलवा सके। और देन दैट वाज अ सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम आवर एंड। We got the patent for that lady. She is now started separate winery for this thing. She got the permission. She has a separate industry now. I go back to my equation. One invention is equal to one patent. One patent is equal to one industry. So इसका one invention था। वो इन्वेंशन था रोज वाइन बनाना का, उसको हम लोगों ने पेटेंट लिया। पेटेंट की इंडस्ट्री खड़ी हुई है। अभी उन्होंने 11 एकड़ में गुलाब लगाए, रॉ मटेरियल खुद बनाती है। जुन्नर में उन्होंने इंडस्ट्री वाइनरी डाली हुई है। एंड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो वी हैव अप्लाइड फॉर हर पेटेंट देयर इन ऑस्ट्रेलिया। सो भारत से बाहर जाएगी उनकी। so, मेरा मैसेज टू ऑल ऑफ यू हियर इज दैट सक्सेस स्टोरीज। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, वो वाली बातें ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से, आइडिया स्टेज से ही आप अपना प्रोटेक्शन शुरू करें, ना के बाद में। आइडिया स्टेज में आपने पीएस फाइल किया तो आपके पास 12 महीने मिलते हैं। 12 मंथ में आप अपना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, पूरा पेटेंट दाखिल कर सकते हो। पेटेंट की जो आइडिया स्टेज है, जहां पे आपने ब्लॉक किया है, वहां पे आपको डिटेल आपकी इन्वेंशन की देने की जरूरत नहीं होती है। आपने दिया हुआ है वो कोई चुरा भी नहीं सकता है, बिकॉज दैट विल कीप कॉन्फिडेंशियल, दैट विल नॉट पब्लिश बाय द पेटेंट ऑफिस। So remember, idea stage is very important for procedure for the patent, not the last stage of submission of the patent. Draft तो बाद में, जैसे आप कोई बिल्डिंग खड़ी करते हो तो पहले लैंड देखते हो कि लैंड की कितनी मजबूती है और उसके हिसाब से आप अपनी लैंड को मजबूत करना चाहते हो। वैसे आपकी आइडिया को आपको मजबूत करना है ताकि आपकी पेटेंट का जो बिल्डिंग है वो अच्छी तरह से उसमें खड़ा हो जाए। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। वैसे ही बच्चे का इन्वेंशन कैसे कन्वर्ट हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ग्लोबल सिनेरियो के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि कहाँ पे भारत है। भारत बहुत नीचे है। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द वेरियस कैटेगरीज, ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, different intellectual property like what we discussed, symbol, visual symbol, then your literary artistic work. We work for Lal Bagh Raja. We work for the highest number of GIs in India. हम लोगों को सबसे ज्यादा GI पुनेरी पगड़ी से लेके पैठनी साड़ी तक हम लोगों ने सभी GI लिया है। Engineering students also required. There is a big misunderstanding with respect to the industrial design and the patent.
काफी इंजीनियरिंग के बच्चों को लगता है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन यानी पेटेंट है। नहीं, इंडस्ट्रियल डिजाइन इज अ सेपरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपके पास शेप है, कॉन्फ़िगरेशन है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उस प्रोडक्ट का आप डिजाइन बना चुके हो, तो उस डिजाइन के लिए सेपरेट आपका प्रोटेक्शन होता है, दैट मे नॉट कंसीडर एज अ पेटेंट। For industrial design, the term is 10 plus 5 year. For patent, the term is 20 years. Your teacher might have taught you all these things, but I will not again spend much on time because I wanted to focus on the procedural aspect. But as and when I required that certain messages to be conveyed, here is the message like, remember, you might have developed a design, but that may not be necessarily your patent. That may be an industrial design. Now, I have already covered that one device is having many patents. So आपके मोबाइल है, मोबाइल में काफी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए पेटेंट है, उसका नाम है मे बी मोटोरोला, मे बी नोकिया, मे बी एप्पल, दैट इज अगेन अ ट्रेडमार्क। उसका स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो देखने के बाद पता चलता है कि अरे ये एप्पल का है, तो दैट इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल डिजाइन। एंड उसके लिए जो आपको लिफलेट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज बुकलेट। नाउ नीड ऑफ अ पेटेंट्स। Innovation opens us new vistas of knowledge and new dimension to our imagination to make everyday life more meaningful and rather rich in it. These are the good people's message we will find. Abdul Kalam sir, जो हमारे past president है, उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए सब कुछ बनाया करे, आर्य माचेकर sir. Now I support the stand number one, necessity is the mother of invention, and then idea stage. Idea stage, few examples. इन लोगों ने, अपने छोटे छोटे बच्चों ने कैसे उस आइडिया को दिशा दे दी है। ये देखो, शॉक एब्सॉर्बिंग स्ट्रेचर, ये हेमा प्रधान सिक्किम की बच्ची है, 8th स्टैंडर्ड की है। पेशेंट को कहीं तकलीफ ना होए और उन्होंने देखा कि तकलीफ हो रही है जब पेशेंट को मुंह किए जा रहा है, तो उन्होंने शॉक एब्सॉर्बिंग स्ट्रेचर्स बनाए। स्ट्रेचर तो था ही था, शॉक एब्सॉर्बिंग कंसेप्ट भी था, टेक्नोलॉजी भी था। तो उन्होंने उस कंसेप्ट को, उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इस्तेमाल किया ताकि पेशेंट का कंफर्टनेस बढ़ जाए। Here again I say, go back to my statement, 97% inventions are improved inventions, 97% patent are improved patent, and only 3% patents are original patent. So स्ट्रेचर तो था, शॉक ऑब्जर्वर भी टेक्नोलॉजी थे, तो उसका इस्तेमाल किया, एम्बेडेड सिस्टम में लाया, उसको पूरी इसमें से लाया, एंड देन शी गॉट द पेटेंट ऑन दैट। सिमिलर लाइन, necessity is the mother of invention, the invention leads to the patent. बाम्बू बास्केट वेविंग मशीन, ये भी बहुत ही बढ़िया, झारखंड की सुमित जी ने बताया कि पहले हाथों से बनाया जाता था, जहां पे बहुत कम प्रोडक्ट बनते थे, वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने वेविंग मशीन बना दिया जो झारखंड में उपलब्ध है, और उसका भी पेटेंट के लिए अप्लाई किया। मल्टीपर्पज ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, मल्टीपर्पज, ये एक ही बच्चे ने ओडिशा के किया है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। नाउ आई एम कमिंग टू द प्रोसीजर एस्पेक्ट। व्हाट इज पेटेंट? Patent is a monopoly right granted to a person who has invented new and useful article and has developed a new process of making an article. हम लोगों की ये सब पेटेंट है, हम लोगों ने जिसके ऊपर काम किया है, रोज पेटल वाइन हो, ड्राई स्ट्रॉबेरी हो, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल बाइक हो, हमारे 100 पेटेंट्स, और राहुल यूनिवर्सिटी के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। सो ये आपको, अगर ये मीनिंग आपको समझ में आता है, यू डिवाइड दिस मीनिंग इनटू 2-3 sub points. What is first is a patent is a monopoly right. पेटेंट क्या है? पेटेंट इज अ मोनोपोली राइट है, मतलब आपके इन्वेंशन के लिए आपने पेटेंट का अप्लाई किया, तो ये आपका मोनोपोली राइट है। यू एंड यू ओनली कैन मेक इट। गो बैक टू माय, मैंने समझो एक डस्ट फ्री चौक बनाया और उसके लिए पेटेंट ले लिया, तो मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसकी पोजीशन मेरे पास ही रहेंगी। जैसे ये मेरी समझो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफिस, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज इन माय पोजीशन, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, नो वन विल
claim on that. So यहाँ पे आपका पेटेंट मोनोपोली राइट क्रिएट करता है. You only can get it from here to other place and that's the things. किसको मिलता है? पर्सन. यहाँ पे पर्सन कौन है? पर्सन में बी एन इंडिविजुअल और पर्सन में बी लीगल एंटिटी. I mentioned IBM, Microsoft. What are they? They are legal person. Those are companies. So आपका first question हमेशा procedure का आता है, who can file an application? So either it may be a legal person or an individual can file an application. So legal person मतलब आपकी कंपनी है, वो applicant बन सकती है और आप inventor बन सकते हो. But remember, it has to be filed for the new and useful. आपका पेटेंट नया होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए. That is very, 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 very important. And what is the message to all of us with respect to this? इससे आपको पता चलता है कि आपकी इंग्रेडिएंट ऑफ द पेटेंट क्या होनी चाहिए प्रोसीजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके ड्राफ्ट में कन्वर्ट होनी जरूरी है. पहला इंग्रेडिएंट है नॉवेल्टी. ये मीनिंग बताएगा नॉवेल्टी. ये मीनिंग आपको बताएगा इन्वेंटिव स्टेप्स. ये मीनिंग आपको बताएगा कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो आपका पेटेंटेड इन्वेंशन नया होना चाहिए, उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए. मतलब आपने कहा उसको मैंने ऐसे ही बनाया, नहीं हवा से तो थोड़ी इन्वेंशन आएगा. हवा में मैंने हाथ घुमाया और जादू से मैंने इन्वेंट नहीं. इन्वेंटिव स्टेप उसमें आपने, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी जो इन्वेंशन डायरी वो बहुत 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 हेल्प करती है जब आप पेटेंट ड्राफ्ट करते हो. एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, पेटेंट इज एन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. आपने केवल कहा कि मैंने पेटेंट लिया, पेटेंट लेके आपने घर पे आपकी सर्टिफिकेट लगाई, नहीं. अगर आपका पेटेंट इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं होता है तो आपका पेटेंट रिवोक हो सकता है. एंड हेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिवोक होता है मतलब गवर्नमेंट आपको जब पेटेंट देता है तो पेटेंट आपकी तरफ से वापस भी ले सकता है, क्योंकि आपको जो मोनोपोली राइट दी है उसका आपने सही इस्तेमाल नहीं किया है. That you'll have to remember. And hence I took that basic information के पेटेंट कैसे वगैरह. Now procedural aspect में सबसे important होती है section understanding. तो यहाँ पे आपको section 2.1 जो मीनिंग बताएगा, invention means new product and process. In short, this is a message to all of us. Patent can be granted either to the product or process. So let me give you an example. Aspirin. Aspirin ये प्रोडक्ट है, इसको भी पेटेंट मिल सकता है और एस्पिरिन बनाने की प्रोसेस को भी मिल सकता है. तो एस्पिरिन बनाने की प्रोसेस समझो X + Y + Z पर्टिकुलर रेशियो से है, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, तो वो वाला आपका प्रोसेस है. अगर किसी ने A + B + C बनाया, अलग प्रोसेस है जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, तो भी आपको पेटेंट मिल सकता है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इम्प्रूव वर्जन, मॉडिफिकेशन कैन ऑल्सो लीड टू द इन्वेंशन, कैन लीड टू द पेटेंट. सो ये वाली बातें ध्यान में रखना है. वापिस दूसरा मैसेज थ्रू दिस डेफिनेशन से है, टेक्निकल सॉल्यूशन टू द टेक्निकल प्रॉब्लम. रिमेंबर, इन्वेंशन के बारे में हमारी जनरल स्टेटमेंट हम लोगों ने देख ली है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. बट इन्वेंशन के बारे में टेक्निकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो आपकी ड्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त होता है. टेक्निकल सॉल्यूशन टू द टेक्निकल प्रॉब्लम. Let me give you an example. When I was in IIT Kanpur in 2005, one professor gave an excellent example or excellent support for this technical solution to the technical problem. ये आपको इन्वेंशन की तरफ लीड करेगा, ये आपको पेटेंट की तरफ लीड करेगा. यहाँ से ही आपकी प्रोसीजर स्टार्ट होती है. तो पहला ये एग्जाम्पल था स्पीड लिमिट जोन का. आप हमारे पास भी स्पीड लिमिट जोन है. अगर यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई, when you are crossing the Lonavala, you will find 40 number. That 40 is the figure on road itself. It means that you should not drive your car more than 40 km/h speed. लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जोन कहाँ से शुरुआत होती है और वो कहाँ पे एंड होती है. तो दिस अगर आप क्रॉस भी करते हो तो आपको पुलिस अगर पकड़ते हैं, समझो आप 40 किलोमीटर के बदले 50 किलोमीटर से ड्राइव कर रहे हो और आप पुलिस उसके लिए 60 km/h से स्पीड में दौड़ेंगे और आपको पकड़ेंगे, तो ऐसे में द बिग प्रॉब्लम इज
a technical problem is to prove that आपकी speed limit zone कैसे मतलब violate हुई है. So that was a problem for the US government, and they invented a satellite system. Satellite system में उन्होंने आपका जब कार उस स्पीड लिमिट से ज्यादा दौड़ रहा है और आप पुलिस लोगों के पास एविडेंस नहीं आएगा, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि सैटेलाइट सिस्टम विल get the information as an evidence that you have crossed that speed limit, and then immediately next police zone will come with the report that okay आप 40 के बदले 50 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा रहे थे और ये प्रूव है, ये सैटेलाइट सिस्टम है इसके लिए. तो that satellite system is a technical solution of the technical problem what police people were facing, and they applied for a patent for that. तो ये पहला पेटेंट हुआ था. दूसरा अभी बन गया था इंडिविजुअल के लिए, उसको पता नहीं है कहां से स्पीड लिमिट चालू है, तो इसका मतलब ये नहीं तो घर से ही वो 40 किलोमीटर से दौड़ा है. तो इसके लिए उसका प्रॉब्लम प्राइवेट एजेंसी ने सॉल्व किया कि यू कैन फिट द सैटेलाइट डिटेक्टर इन योर कार एंड देन वंस यू आर रीचिंग टू दैट स्पीड लिमिट जोन द सैटेलाइट डिटेक्टर विल इन्फॉर्म यू ओके प्लीज गो स्लो नाउ you are crossing the speed limit zone of 40 किलोमीटर पर आवर. तो वो वाला दूसरा इन्वेंशन. तो मैंने इन शॉर्ट द मैसेज इज टू ऑल ऑफ अस, a technical solution to the technical problem is leading to the invention, and that is mentioned in the section, and that is leading to the patent. We have to remember that. Technical solution to the technical problem, ये काफी वाली एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे. ये ओमनी डिसइंफेक्शन कूलर है which throws cool air in all direction. जो अपना कूलर है वो एक ही डायरेक्शन पे था, लेकिन ये कूलर ने सभी डायरेक्शन के ऊपर है. Now what kind of invention can be protected under patent? I have already covered. It may be method, it may be machine, it may be composition of matter. आप कौन सा पेटेंट के लिए जाने चाहते हो आपको पहले ही पता चलना चाहिए. Whether it is method, machine, composition of matter, manufacturing है, उसका डिस्क्रिप्शन राइट पे अ वे ऑफ ट्रेडिंग मटेरियल प्रोसीजर रिजल्ट्स सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस है. इंडिया में सॉफ्टवेयर पर से इज नॉट पेटेंटेबल बट इट्स टेक्निकल एप्लीकेशन अलोंग विद द हार्डवेयर इज पेटेंटेबल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपकी वॉशिंग मशीन है, वो इसके ऊपर चलती है कि 40 मिनट के लिए वो वॉश करेगा, 10 मिनट के लिए वो ड्राई करेगा. ये प्रोग्राम फिट है, तो ये प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो उस मशीन के साथ जुड़ा हुआ है. सो इसीलिए इवन सॉफ्टवेयर पर से इज नॉट पेटेंटेबल बट इट्स टेक्निकल एप्लीकेशन अलोंग विद द हार्डवेयर इज पेटेंटेबल. दैट यू हैव टू रिमेंबर. देन ऑफ कोर्स रोबोटिक रोबो है, ये मशीन है, उसका जीआई आपको मिलेगा, एलईडी मॉनिटर, फ्यूल इंजेक्शन, इंजन एक्सेलरेशन. कंपोजिशन मैटर है, केमिकल है, मेटलर्जिकल कंपोजिशन है, अलॉयज है, एक्सेट्रा. दैट कैन बी आल्सो मैन्युफैक्चर एंड आर्टिकल्स. हम लोगों ने काफी किए, जो जेरोक्स मशीन हम लोगों ने उसके हिसाब से एक्सरे मशीन वगैरह हम लोगों का इसमें से. व्हाट आर क्राइटेरिया फॉर द पेटेंटेबिलिटी? आपको अगर ये क्राइटेरिया पता है तो ही आप ड्राफ्ट अच्छी तरह से करते हो, क्योंकि यही क्राइटेरिया आपके ड्राफ्ट में रिफ्लेक्ट होता है. सो नंबर 1 नॉवेल्टी. आई हैव ऑलरेडी मेंशन न्यू एंड स्कूल. नॉवेल्टी मींस व्हाट? नॉवेल्टी इसके लिए इंटरप्रिटेशन किया गया है कि your product, your process which you intend to file a patent should be novel, means not available in any part of the world, any form, in any form. What does it mean by any form? यहाँ पे दो फॉर्म आपको expected है. Number 1 is a patented form and number 2 is a non-patentable form. What is mean by patentable form? Patentable form में आपका आएगा patent literature and non-literature. Basically literature में आएगा पेटेंट फर्दर, पेटेंट फाइल हुआ है क्या, पेटेंट पब्लिश हुआ है क्या, और थर्ड कैटेगरी आएगा कि पेटेंट लैप्स हुआ है क्या. 20 साल आप पहले आपका पेटेंट फाइल हुआ है, पेटेंट टर्म खत्म हो गई है, एंड दैट इज इन पब्लिक डोमेन. सो दैट इज अ पेटेंटेड लिटरेचर बेसिकली. और रिमेंबर, नॉट ओनली इन योर कंट्री बट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. केवल देश में नहीं, इसमें उसके लिए उस सिमिलर पेटेंट के लिए काम हुआ है क्या, चाइना में हुआ है क्या, that you have to correct. Before going for a patent, this homework should be strong enough.
अदरवाइज आपके पेटेंट ग्रांट के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं. दिस ऑल study analysis should be reflected in your patent draft, that you have to remember. Second, inventive steps. Inventive steps में क्या है? उसको कहते हैं कि बेसिकली टू इन्वेंटिव स्टेप में दो घटक इंपॉर्टेंट है. वन इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड सेकंड पर्टिकुलरली टेक्निकल इनहांसमेंट. तो मैंने कहा कि वो टेक्निकल इनहांसमेंट था जो आपकी वुडन की जो ये बना रही है लेडी, वो वाला टेक्निकल इनहांसमेंट है. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, समझो वो एक दिन में 10 बनाती थी, ये 50 बनाएगा. So you'll have to prove that. In other words, you'll have to remember that a person जो बना रहा है उसके लिए वो नॉन ऑब्वियस हो, तभी इन्वेंटिव स्टेप प्रूव होता है. अगर आपकी इन्वेंटिव स्टेप नहीं है तो आपको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा. ये तीनों बातें आपके ड्राफ्ट में आनी है और इन तीनों बातों के ऊपर ही आपके एग्जामिनर आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट देते हैं. वेदर योर इन्वेंशन इज नॉवेल, अगर है तो क्या है, इन्वेंटिव स्टेप है तो है या नहीं. थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, केवल आपने बना के रखा है, घर पे रखा है, तो दैट इज नॉट. एंड फोर्थ, लोग जनरली ये देखते नहीं है, लेकिन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. इवन यू हैव ऑल दीज 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल, आपके ड्राफ्ट में आ जाएगी, लेकिन आपका इन्वेंशन अगर 3 और 4 में बैठता है तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. पेटेंट 4 में मतलब क्या है, 3 और 4 क्या है? आपका प्रोडक्ट अगर पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, सेंटिमेंट के उसमें से मियर रीअरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट है, केवल नींबू शरबत बनाने के लिए कहीं पे शक्कर ज्यादा डालना है, कहीं पे नींबू ज्यादा है और बनाया, आपने कहा कि मेरा बेस्ट है, नहीं है. दैट इज मियर एडमिक्सचर वाला है, वो इन्वेंशन नहीं हो सकता है. आपने कहा मैंने एक ऐसा एटम बॉम्ब बनाया जो पेन में रख के कहीं पे भी जा सकता है, तो दैट इज अगेन द पब्लिक मॉरलिटी. दोस थिंग्स कम्स अंडर द सेक्शन 3 एंड 4. मतलब आपको पेटेंट ड्राफ्ट करने से पहले ये रिक्वायरमेंट प्रॉपरली स्टडी करने जरूरी होते हैं और उसके बेसिस के ऊपर ही आप अपना पेटेंट ड्राफ्ट शुरू करो. These are the few questions. I will not go into detail again, but we'll read it for you. That first question, does it fall under the inventions of patentable law? The Patent Act 1907 के माध्यम से पेटेंटेबल इन्वेंशन है क्या नहीं है? अगर नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन है, सेक्शन 3-4 अप्लाई है, तो आपको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, करेंगे तो भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा. What I said, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, इसकी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है करें. मैंने कहा कि न्यू, वेदर द इन्वेंशन इज न्यू, नॉवेल है क्या नहीं. Is invention something not easily convinced? That is inventive steps. What I have said, economic significance and technical enhancement. What I said, non-obvious to the person skilled in the art. Best example is आपका कारपेंटर. पहले जमाने में कारपेंटर एक समझो पॉलिश करता था तो उसको वो एक सर्टन हाथों से मशीन के ऊपर करता था, बाद में जीरो पेपर के उसमें से, बट अभी वही मशीन में वो जीरो पेपर लगाता है और एक ही टाइम पे अपनी एनर्जी बचाता है, समय बचाता है और अपना काम भी करवा लेता है. So this is non-obvious to the person skilled in that. The another example आपका पेंसिल है. पहले जमाने में पेंसिल अलग रहा करता था, इरेजर अलग रहता था. बाद में बच्चे कुछ लोगों ने पेंसिल को एक जगह पे लीड और दूसरी जगह पे इरेजर करता है, ताकि एक ही डिवाइस में आपका काम हो जाएगा. You don't have to carry a separate device for that. So this is something different. Is invention something not easily convinced? Are there any prior application? मैंने कहा कि पेटेंटेड लिटरेचर है या नॉन पेटेंटेड लिटरेचर है, वो आपको पहले से ही देखना पड़ेगा. वरना अगर पहले से ही किसी ने पेटेंट फाइल किया है तो आपका पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, रिफ्यूज हो सकता है और आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है. सो इसीलिए प्रायर आर्ट सर्च इंपॉर्टेंट है. मैं रिपीटेडली, मैंने ज्यादा समय इसीलिए पहले सिग्निफिकेंस के ऊपर और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लगाया, ताकि ये अगर पक्का है तो ही आपका पेटेंट एप्लीकेशन पक्का होगा. वरना प्रोसीजरल एस्पेक्ट तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्नो लीगल
ड्राफ्ट है, लेकिन उसके फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी कहा पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मॉरल, अगर मैं कह रहा हूँ कि पेटेंट आइटम, पेटेंट एटम बॉम्ब बना दिया और इसके लिए नहीं मिले मेरे को, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, और अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया ही है। तो इन शॉर्ट, बिफोर गोइंग फॉर अ पेटेंट ड्राफ्टिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉन पेटेंटेबिलिटी एंड पेटेंटेबिलिटी ऑफ इन्वेंशन। देखो, मैंने कहा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इन्वेंशंस, ये है बुलेट शांति मोटर बेस मल्टीपर्पज प्लस इनोवेशन फॉर द पेटेंट इन इंडिया एज यूज फर्स्ट नेशनल ग्रॉस रोड। इसका अल्टरनेट टू बुलक कार्ट और ट्रैक्टर को वर्क करने के लिए इन्होंने छोटा सा ये इन्वेंशंस किया, और इसके लिए ये 8 से 12 एकड़ 8 घंटे में पूरा वो मल्टीपर्पज प्लग करेगा, और दिस इज आल्सो गॉट द पेटेंट। दिस पेटेंट वी वर्क, these are the basically our patent मतलब हेल्थ, आपका ब्रेन ट्यूमर रोकने के लिए एक आदमी ने बनाया हुआ है, और we have n number of patents. These are of our patent work basically. I have already mentioned. This is an actually मतलब technical solution to technical problem मैं कहता हूँ। आज की तारीख में you know that hydro plant is there for generating the energy. Then you also know that thermal plant is there. But हम लोगों ने ये इन्वेंशन कुछ बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए किया, कि आपकी एफिशिएंसी जो समझो कोल जहाँ पे जितना डाल रहा है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 45% ही आपका आउटकम आ रहा है, सो 55% आपका वेस्ट जा रहा है। तो वी हैव आइडेंटिफाइड अ टेक्निकल सॉल्यूशन एंड अप्लाइड फॉर अ पेटेंट, एंड पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड दैट 85% तक एफिशिएंसी हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन पंचकर्मा इक्विपमेंट हम लोगों ने किया, एंड 100 मार्क्स 95 मार्क्स था ही था, बट भारत के हम लोगों ने यूके के ये पेटेंट वालों के लिए किया कि 100 मार्क्स 100% प्रोटेक्शन विल बी देयर। राहुरी के लिए हम लोगों ने 15 पेटेंट के लिए काम किया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प फ्रॉम दी, मतलब आपको देखना है हमेशा कि कौन सी वाली बातों के लिए पेटेंट मिल सकता है। तो सीताफल था, ये कस्टर्ड एप्पल था, उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं, और उसके लिए इक्विपमेंट बनाया, उसकी पेटेंट हम लोगों ने किया। डिवाइस फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ हाउस, ये इन दिनों में डिसइंफेक्शन का मौत, उसका भी हम लोगों ने किया। एक ऐसा पेटेंट हम लोगों ने किया, ये अभी ग्रांटेड स्टेज में है और उसकी डिमांड बढ़ रही है। बेसिकली फ्रॉम वन हॉस्पिटल इन डेरवन कॉल्ड बालावलकर हॉस्पिटल, वी वर्क फॉर दिस हॉस्पिटल्स, कि महिलाओं को पता चलेगा कि कौन से दिन उनका पीरियड आने वाले हैं, एग्जैक्ट डेट पता चलेगा, ताकि वो देख शी कैन प्रिपेयर एंड देन शी कैन रिलैक्स हरसेल्फ। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हम लोगों ने काफी किए। Before going for the patent draft, you need to understand objectives of the patent, because that should be reflected in your draft. क्योंकि ड्राफ्ट में हमेशा कुछ स्टैंडर्ड वाली बातें रहती है, उसमें से इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंशन, समरी ऑफ इन्वेंशन, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंशन, एंड फाइनली द क्लेम्स ऑफ द इन्वेंशन। सो दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ आपके इन्वेंशंस का विल कम फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेटेंट। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता चलना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ द पेटेंट क्या है। समझो आपने पेटेंट किया, साइंटिफिक है, आपको इंकरेज मिलेगा, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होगी, ग्रांट होगा, साइमल्टेनियसली आप बढ़ते जाओगे। जैसे हम लोगों ने शुभांगी पाटिल मैडम का किया, 1 2 3 हमारे 3 पेटेंट आगे चल रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वही आपका आप अभी आप जो कर रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, टेक्निकली साउंड कर रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग है। वो क्यों होता है टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि आपने डायरी मेंटेन नहीं की है, आपके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, आपके पास फाउंडेशन अच्छा नहीं है। अगर आप ये करोगे तो प्रोसीजर इजी हो जाएगी। वी हैव अ रिकॉर्ड, हमारे पास 5.5-6 महीने में पेटेंट ग्रांट के हमारे खुद की रिकॉर्ड है। जिस लेडी के लिए हम लोगों ने काम किया था, वो लेडी फ्रॉम नासिक से है। नाउ द मोस्ट, मतलब आप आज की जो मेन टाइटल है सब्जेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन, वो था प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट। अभी तक हम लोगों ने देखा सिग्निफिकेंस, अभी तक हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंस, अभी तक हम लोगों ने देखा वेरियस एग्जांपल, अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज प्री रिक्विजिट बिफोर फाइलिंग ऑफ अ पेटेंट। प्री रिक्विजिट में आपको सेक्शन 2 देखना है, सेक्शन 3 देखना है, सेक्शन 4 देखना है। ये मैंने सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको क्या देखना है मैंने इनडायरेक्टली बताया कि
You'll have to see the prior art, you'll have to see the necessity, you'll have to see the solution, you'll have to see the technical problem, and etc. Now, the entire procedure is depend on all these elements what we have discussed so far, and mainly divided into four major parts. प्रोसीजर केवल चार मेजर पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 एप्लीकेशन, नंबर 2 उसके बाद पब्लिकेशन होगा, नंबर 3 होगा एग्जामिनेशन, नंबर 4 उसके बाद रजिस्ट्रेशन। मैंने ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपकी इन्वेंशन, आपका प्रोसीजर फॉर द पेटेंट आइडिया स्टेज से होता है। आइडिया में आप पेटेंट एप्लीकेशन कर भी सकते हो, आइडिया उसको ब्लॉकिंग ऑफ द इन्वेंशन कहोगे, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, एंड एट द सेम टाइम आइडिया स्टेज के बाद आप किसी के साथ जुड़ना चाहोगे तो आप उसके साथ जुड़ सकते हो। आइडिया टू फिजिबिलिटी, आपको पेटेंट मिलने वाला है या नहीं, आप वहीं पे बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू बिगिनिंग, फिजिबिलिटी चेक करना है आपको, कहीं पे है, कहाँ पे है, कितना है, इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, टेक्निकल इनहांसमेंट है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, वो सब देखो। फिर आपके अपने इन्वेंशन को डेवलप करो। आपका पेटेंट अटॉर्नी आपको पूरा गाइड करेगा अगर आप आइडिया स्टेज में ही उसके पास जाते हो तो, और वो आपको डेवलपमेंट बताते जाएगा ऑन अकॉर्डिंगली यू कैन लुक इनटू द मैटर्स। फिर टेस्टिंग करो, मैंने टेस्टिंग के बारे में, अगर किसी के बाहर टेस्टिंग कर रहे हो तो आप उसके साथ एनडीए साइन करो। डू नॉट जस्ट डिस्क्लोज योर इन्वेंशन, यू विल लूज द आइडिया। In short, this is a materialization of the idea. Most important factor of carefully, do not rush to publish your invention. If you publish your invention, you will perish your invention. You will perish your patent. हम लोग जल्दबाजी में, अरे मैंने ये इन्वेंशन किया, फिर मैंने ये न्यूज़पेपर में डाला, मैंने यहाँ पे जर्नल में लिखा। Don't do that. It is very harmful to your patent, it is very harmful to your intellectual property. तो अगर आपका पब्लिश हुआ है, पब्लिक हुआ है, तो मैंने जो कहा ना, पेटेंटेड नॉन पेटेंटेड लिटरेचर पब्लिक में आता है तो आपका नॉन पेटेंटेबल लिटरेचर आप ही के इन्वेंशन को किल करेगा और आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो रिमेंबर दैट, डोंट पब्लिश योर क्रिएशन, इन्वेंशन, your intellectual property, and don't perish that. Instead of that, go for a patent, then patent application will be published by the government and that may lead to the prosperity. मैंने इनडायरेक्टली कहा कि क्या देखना है, नॉवेल्टी सर्च करना है, पूरी दुनिया में सर्च करना है, उसको टेक्निकली कहते हैं प्रायर आर्ट सर्च। दैट इनेबल अस, मतलब पेटेंट अटॉर्नी को पूरी आइडिया दे देता है कि क्या योर पेटेंट इज इन्वेंटेबल इन्वेंशंस है, और अगर है तो कैसे, उसमें उसमें नॉवेल्टी है, उसमें इन्वेंटिव स्टेप है, तो आगे कैसे जाए। नाउ दीज आर द practical aspects of applying a patent. The first question need to be answered: who can file a patent application? Here I have already answered true and first inventor is entitled to file an application. Now the second, basically we have also discussed that if you are working for a company, then company will be an applicant and you will be the inventor. You will have no economic right basically it depends on the company, but in due course of an employment, whatever the employee develop, it belongs to the employer, is the standard rule applicable for the patent. So आप IBM के लिए काम कर रहे हैं तो IBM applicant है और आप inventor हैं, तो monopoly right IBM को जाएगी, आपको नहीं, and this is there. However, individual, अगर वो कोई कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है और आप वो खुद एप्लीकेशन कर रहा है तो उसको नेचुरल पर्सन कहते हैं, वो भी एप्लीकेशन खुद के नाम से डाल सकता है। पेटेंट अटॉर्नी कैन हेल्प बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज कंपनी। वेयर टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन? इनफैक्ट पहले अलग अलग पेटेंट ऑफिसेस, हमारे यहाँ पे भारत में 4 पेटेंट ऑफिसेस, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, वहाँ पे जुरिस्डिक्शन वाइज पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए जा सकते थे, लेकिन अभी बहुत ही इजी किया है, फिजिकल फाइलिंग पूरा बाद में रिप्लेस किया है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से, और इलेक्ट्रॉनिकली यू कैन फाइल द पेटेंट एप्लीकेशंस। These are the sections you have to remember. Who can be an applicant? I have already mentioned true and
फर्स्ट इन्वेंटर. इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी कंपनी, इट मे बी पार्टनर. आप अगर 10 इंडिविजुअल इकट्ठा आके फाइल कर रहे हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. देयर वोंट बी एनी अफेक्ट ऑन फीस एंड नथिंग. एक्चुअल इन्वेंटर्स असाइनिंग मतलब समझो आपने इन्वेंट किया है और आपके दोस्त को आप असाइन दे रहे हो कि भैया तू कर दे, मेरे को नहीं जमेगा. कि you are into business, so that can also be possible. Here is an applicant, not necessarily आपका कंपनी हो जाए. लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो आपकी तरफ से काम कर सकता है. इन कंसेंट ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड अगर आपके पास दो से भी ज्यादा इन्वेंटर है. Where to file the patent application? I have already mentioned that initially it was jurisdiction wise or basically पहले हेड ऑफिस रहा करता था, अभी भी है, कोलकाता इज हेड ऑफिस, बट वी now file online and then it goes to the various examiner. So these are the 4 offices. Basically regional offices कहोगे आप, अलग अलग स्टेट के लिए वो काम करते हैं. Now how to file a patent? This is number 1 requirement. Forms must accompany with this specification. Form 1 as per the section 7 I'm going to talk जरूरी होता है. उसके अलावा आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होती. उसके साथ होता है फॉर्म नंबर 2 जो स्पेसिफिकेशन बताता है, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, दिस विच इज अ टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट. टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको लीगल रिक्वायरमेंट को लेके टेक्निकल डिटेल्स उसमें आते हैं एंड देन दैट हैज टू बी देयर विद along with the form number 1. Visual representation. Claim is a legal boundary. आपको अटॉर्नी की जरूरत होती या नहीं होती वो बेसिकली जैसे कोर्ट में होता है कि नॉर्मली ही अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ यू, ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. वैसे अटॉर्नी फिर या फिर पेटेंट एजेंट आपकी केस पेटेंट ऑफिस को देते हैं. ही इज अलाउड एंड फॉर्म 26 होता है जिसके माध्यम से वो अलाउ किया जाएगा. नाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट प्रोविजन स्पेसिफिकेशन यू कैन ब्लॉक एन आइडिया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन केवल स्कोप तैयार करेगा, लेकिन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पूरी इन्वेंशंस का स्कोप बनाएगा. प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वो आइडिया ब्लॉक करेगा, लेकिन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पूरी आइडिया मटेरियलाइज किए जाने के डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे. प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में आपका एप्लीकेशन सबमिट होने से 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना ही देना है. बट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जैसे ही आप दोगे आपका एप्लीकेशन. इन शॉर्ट, अगर आपका इन्वेंशन रेडी है तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की तरफ जाओ. अगर आपका इन्वेंशन आइडिया स्टेज के ऊपर है, आप प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रोविजन स्पेसिफिकेशन. दोनों भी फॉर्म 1 के माध्यम से सेक्शन 7 माध्यम से काम कर सकते हैं. The most important aspect of your patent application is your drawing. Drawing should be very clear. जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल दिया है कि अमेजॉन के अलेक्सा का ड्राइंग है. आप देखोगे कि कैसे उन्होंने बनाया कि क्या अलेक्सा काम करेगी, कैसे फंक्शन होगा, कैसे कनेक्ट होगा. ये सब ड्राइंग प्रॉपर होने चाहिए. वाटर ट्रीटमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे, उसका फ्लो चार्ट अच्छी तरह से होना चाहिए. आपने एप्लीकेशन तैयार किया, इट मे बी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस पब्लिश करता है रूल 24 के माध्यम से. उसमें अर्ली पब्लिकेशन कर सकते हो आप. विद इन नॉर्मल पीरियड है 18 महीने, आपका पब्लिकेशन 18 महीने तक होना चाहिए, पेटेंट एक्ट कहता है. लेकिन आप उसको 1 महीने के अंदर पब्लिश कर सकते हो. और सेक्शन 11 ऑफ द पेटेंट एक्ट इज कंसर्न, आपका अर्ली पब्लिकेशन इज लाइक प्रिविलेज ऑफ ग्रांट. मतलब आप उस दिन से आपका पेटेंट कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो. सो इन शॉर्ट 1 महीने के अंदर आपका पेटेंट पब्लिश हो सकता है. ये ध्यान में रखिएगा. और बाद में एग्जामिनेशन होगा. क्या होगा पब्लिकेशन में? नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, समरी ऑफ द इन्वेंशन जो आप एप्लीकेशन में देते हो उसमें आ जाएगा. बेनिफिट ऑफ पब्लिकेशन इज एन नंबर आई हैव ऑलरेडी सेड कि लाइक प्रिविलेज ऑफ ग्रांट. थर्ड पार्टी में फाइल प्री ग्रांट अपोजिशन. पब्लिकेशन होता है तो प्री ग्रांट अपोजिशन एक्सपेक्टेड है. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई और बहन दोनों का इसमें ये था और उन्होंने ये किया. नाउ
दिस इज एक्चुअली अ सैंपल ऑफ एग्जामिनेशन। आपका एप्लीकेशन गया है, आपका पब्लिकेशन हुआ है, आपके लिए थर्ड स्टेज है एग्जामिनेशन। नो रिक्वेस्ट नो एग्जामिनेशन। आपको किसी भी हालत में पेटेंट ऑफिस को रिक्वेस्ट करनी है कि एग्जामिनेशन करो। Particular this is specific forms. Form 9 is for publication, form 18 is for एग्जामिनेशन। हमारे यहाँ पे पेटेंट एक्ट बहुत सिंप्लीफाई किया है, अलग अलग फॉर्म बनाए हैं, उस फॉर्म के जरिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट मस्ट होती है कि मुझे एग्जामिनेशन करके दे दो, और उसके लिए भी फी होती है, और उस बेसिस के ऊपर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होता है जो आपको बताएगा। व्हाट आई सेड, आपको मैंने पहले बताया कि नॉवेल्टी है कि आप देख लोगे यहाँ पे नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो हम लोगों ने शुरू को देखा कि प्री एप्लीकेशन स्टेज क्या होनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, वही बातें एग्जामिनेशन रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए वो एकदम केयरफुली आपको देखना होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है तो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड दिया जाएगा, 6 महीने तक आपको रिप्लाई करना है। आप 1 महीने में भी रिप्लाई कर सकते हो, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन, इफ एवरीथिंग इज रेडी। ये जल्दी क्यों हो सकता है? अगर आपकी इन्वेंशन डायरी आपकी परफेक्ट है, आपकी डेवलपमेंट अगर आपकी परफेक्ट है, तो आप इजीली उसको बढ़िया से उसको ले लो। सो वंस यू रिप्लाई टू द एग्जामिनेशन, देन examiner may arrange hearing and may grant you patent, and that is the last stage of granting of the patent. However, normally मतलब कैसा है कि आपको ये इसके लिए पीरियड है 12 महीने 18 महीने, जैसे मैंने यहाँ के पब्लिकेशन के लिए 48 मंथ आपका एग्जामिनेशन के लिए। However, आप एक्सपीडाइट कर सकते हो आपका पेटेंट फाइलिंग, आपका एग्जामिनेशन, आपका पब्लिकेशन, सब प्रोसेस 6 महीने के अंदर कंप्लीट होके ग्रांट भी मिल सकता है आपको। और वही प्रोसेस हम लोगों ने काफी बार किया है, एंड वी हैव रिसीव्ड एन नंबर ऑफ पेटेंट्स। तो ये एक्सपीडाइट कब हो सकता है और कौन कर सकता है? एक्सपीडाइट के लिए कुछ रूल बनाए हैं। अगर आप महिला इन्वेंटर है तो आपका एक्सपीडाइट होगा, अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड है तो आपका एक्सपीडाइट होगा, अगर आप इंटरनेशनल फाइलिंग भारत में कर चुके हो, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम थ्रू द पीसीटी। As I have already mentioned that India is a signatory to the many conventions, so Patent Cooperation Treaty is one of the convention, and through that you can enter into the global market. लेकिन उसका एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा? अगर भारत में आपने उसमें डाला हुआ है, उसको कहते हैं कि इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी और इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो अगर वहां पे आपने डाला हुआ है तो भी आपका एक्सपीडाइट होगा। तो ये एक्सपीरियंट करके आप जल्दी से पेटेंट ग्रांट ले सकते हो। विद इन 7 months ऑल्सो यू विल गेट द पेटेंट। दिस इज इन फैक्ट सर्टिफिकेट। रिमेंबर, डेट ऑफ पेटेंट इज डेट ऑफ ग्रांट एंड डेट ऑफ ग्रांट इज डेट ऑफ एप्लीकेशन। समझो मैंने 1 जनवरी 2021 को एप्लीकेशन किया है और मुझे 1 जनवरी 2022 को पेटेंट मिला है, तो मेरी पेटेंट की टर्म जो 20 ईयर है स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और सब्जेक्ट टू द रिन्यूअल ऑफ द पेटेंट। आपको हर सालाना रिन्यूअल फी पेटेंट ऑफिस को भरनी होती है। अगर आपका फेल हुआ है, मतलब if you fail to pay the renewal fee, then your patent will be lapsed. This is वो again last stage of procedure है। आपका एप्लीकेशन आपने किया, आपकी एग्जामिनेशन हुई, आपको ग्रांट हुआ, आपको रिन्यूअल फी भरनी है, आपने नहीं भरी तो आपका पेटेंट लैप्स हो जाएगा। फिर कुछ महीने में आपको चांस मिलता है कि रिस्टोर करना है, अगर नहीं किया तो वो पेटेंट पब्लिक डोमेन में जाता है, कोई भी आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ वर्किंग ऑफ द पेटेंट। मतलब आप आपका पेटेंट इनफोर्स रखना है, आपका पेटेंट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए है, आपको इंडस्ट्री चलानी है। जैसे कि आई टेक यू एग्जांपल, पूनावाला ग्रुप ने उनकी
कोविशील्ड के लिए पेटेंट लिया हुआ है, अगर वो पेटेंट कोविशील्ड को लेते थे और कोविशील्ड बना ही नहीं थे तो उनके लिए वो एक चैलेंज होता है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट ऑफिस कैन रिवोक योर पेटेंट. सो इन शॉर्ट आपको बेसिकली ये 4 फ्रेज ध्यान में रखनी है, ये प्रोसीजर के लिए. और उसके लिए हमारा जो आगे का पहले वाला देखा है, you have to make an application. Application will be published, it will be examined, it will be further registered. Registration के बाद भी आपके पास obligation है. और at the same time लोग चैलेंज, मैंने थोड़ी देर पहले 25(1) तो सेक्शन 25(1) की जिक्र की, प्री ग्रांट अपोजिशन, वैसे ही पोस्ट ग्रांट अपोजिशन होती है 25(2). आपका ग्रांट मिलने के बाद भी पब्लिश होता है, तब भी लोग आपकी रजिस्ट्रेशन को चैलेंज कर सकते हो. So ऐसे कहा जाता है कि granting of patent does not give you the validity of patent. I repeat the statement. ये procedural aspect में बहुत बड़े मायने करेगा. Granting of patent does not give you the validity of patent. Validity of patent मतलब गवर्नमेंट इसको रिवोक कर सकता है अगर इंडस्ट्री एप्लीकेशन नहीं है, किसी ने और ने पोस्ट रजिस्ट्रेशन आपके ग्रांट अपोजिशन किया तो भी रिवोक हो सकता है. और बाद में समझो पता चला है कि प्रायर आर्ट और पब्लिक में था और अगेंस्ट द पब्लिक मोरालिटी, देन आल्सो दैट आल्सो कैन बी रिवोक्ड. सो ऐसा प्रोसीजरल एस्पेक्ट आपका शुरू होता है एप्लीकेशन, बिफोर एप्लीकेशन, आफ्टर एप्लीकेशन. बिफोर एप्लीकेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द इन्वेंशन डायरी से लेके आइडिया स्टेज, और आइडिया स्टेज से लेके आपका डिटेल, वहां से लेके आपका एप्लीकेशन बनना है. Attorney will play an important role. You'll have to keep the record ready for his references. Then application will be published. Publication is like privilege of grant. Examination hoga. Examination will be issued by the examiner who is appointed there in patent office. And there are certain criteria which are important what we have mentioned: novelty, inventive steps, and industrial application. It has to be novel, there has to be an industrial application, and also that inventive steps, not obvious to the person's skill in the art. And lastly, registration will be done by the patent office, जहाँ पे letter of patent will be issued, and that is from the date of application your patent right starts up to 20 years. And of course, people can raise post opposition. You'll have to renew, you'll have to work on your patent. If you fail to do so, then that may be revoked, or that may be a part of compulsory license. Compulsory license एक डिटेल में डिस्कस करने वाला पार्ट है, उसमें सेक्शन 84, 92, 92A आएगा. जैसे कि अभी कोविशील्ड की जरूरत है, अगर कोविशील्ड सही मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता था तो anyone can apply for the compulsory license, and patent office can grant a compulsory license. It may be national emergency, it may be requirement from the public, depends on the situation. In short, as a layman, as a student level, आपको significance understand करना जरूरी था. कैसे कैसे इन्वेंशन हुए हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कैसा है, टेक्निकल सॉल्यूशन टू द टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, कैसे इन्वेंशंस बनाए गए हैं, इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा. देन उसके बाद प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो इसके ऊपर बेस है वो कैसे होता है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 to 14 कैसे रूल प्ले करता है प्रोसीजर एस्पेक्ट में, वो हम लोगों ने देखने का पूरा प्रयास किया. एंड आई थिंक दैट इज द बेसिस ऑफ टुडेज डिस्कशंस. एंड वैसे प्रोसीजर इतनी शॉर्ट में नहीं कवर हो सकती है, बट हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको समराइज फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. एंड विद दिस अगेन हम लोगों के 2 घंटे वैसे पूरे होकर 2-2.5 घंटे के हमारे ये 15-20 मिनट हम लोग उसके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे. विद दिस आई एम थैंकफुल टू अगेन वाडिया, थैंकफुल टू all dignitaries and principals and all with an opportunity. We can take few questions for another 10, 15, 20 minutes and then we can conclude for a day. Thank you. Sushant. Thank you very much, sir.
I think we can give facility of mic to the participants so Yes, sir. that they can I'll do unmute that. and they can ask the questions. Yes, sir. I will do that, sir. Okay. Dear all, I have unmuted everyone. If someone has any question, please raise your hand and then speak up. Garude sir. I can see one question and chat box. Yes, yes. What if we have invented something and using it personally or locally? Uh, एक minute, locally, that is already a patent. Then what the patent holders will do? Patent holder will file a suit against you without his permission. You are using his inventions, and that is his monopoly right. That is his legal right. Sir, there is one more question from our HOD, sir. Kindly elaborate rights of inventor. Say rights of inventor in one line is monopoly right, exclusive right. That it further included he can use it, he can sell it, he can assign it. Patent is an assignable right. So if I invented this pen, a unique pen, and I do not have maybe a qualification or capacity to exploit this invention commercially, but I have a friend, I can assign him to him, and he can commercially exploit that, maybe make, use, and sell. There are three type of assignment. One is a legal assignment, second is equitable assignment, and third is mortgage. Mortgage concept is yet to be available in India, but it's already introduced. And our finance minister and commerce ministers last time emphasized on that banks should mortgage the patents. So, like your other properties, you can have a mortgage. So you may calculate the value of this invention, maybe 1 crore, and you can mortgage it with the bank. This invention, keep the document with you, the bank, and then can exploit it. So patent is an assignable document. Patent is an assignable right. So legally you can assign with your friend. You may say you are right person. You can start an industry for my pen, and legally you can prepare a document, maybe an agreement. Second, equitable. You just write a letter to your close one, and you can say, okay, this is my invention, and I would like to give it to you. You may please exploit and do whatever you may. Pay royalty to me, may not pay royalty to me, or whatsoever it may. Third is a mortgage. You go to the financial institutes, you give. So these are the different rights which are available to the inventor. Start from the monopoly right, exclusive right, assignable right, right to use, right to sell, right to assign, right to manufacture. Those are the bundle of rights available to the inventor. And basically, along with that right, you'll have to remember the duties. You'll have to renew your patent. You'll have to respond to the office action for the patent, and there you are. You can take the help of the patent attorney. That's it. Yes, there is a question. Can inventor file or establish his own industry apart from applicant? No, inventor cannot establish his own industry without the permission from the applicant. Applicant is the owner of invention. Inventor is just an inventor, because inventor received the support. For an example, IBM. If IBM appointed one engineer and IBM is paying salary to that engineer, IBM is giving facility to that engineer, and that engineer is working the domain given by the or project given by the IBM and invented. So what I started with my basic explanation, that in due course of an employment, whatever you invent, it belongs to the employer and not to the employee. I gave example of US, how they have over for 50% of the inventions happen in US have Indian brains. Those are companies' property. They they can exploit it, and they are the owner. However, in exception situation, like inventor is doing
something different than the project or the domain given by the company. But he has to file a separate application for that. In that case, he is an applicant and he is an inventor. And in that scenario, he can start a separate industry and there is no nexus, no linkage with the applicant. But if it is same domain, if it is same research, if it is similar line of work, then applicant can raise pre-grant opposition or post-grant opposition under section 25(1) or 25(2). Am I audible? Yes, sir, you are audible. If any questions are there, you can unmute yourself and ask the question. I think there are no further questions in the chat. So participants, those are who are having questions, they can unmute and they can ask. Guys, feel free to ask any question. Varude sir, I think there are no questions further. You can Okay, proceed. sir. You can proceed Sir, for. then we will take a photograph first. Yes, yes. Sir, 1 minute, I will give rights to everyone. Yes. सेशन 5-10 मिनिटं संपेल, मी करतो तुम्हाला लेक्चर चालू आहे, करतो 5-10 मिनिटं. All the dignitaries and participants are requested to switch on their camera. We will take a group photo. All students are requested to switch on their camera. So hopefully the message is conveyed. Pardon, sir? Pages. Hopefully message is conveyed. Yes, yes, rightly, sir. Rightly message is conveyed to the students and all the participants. We are really grateful to you, sir, and we will be in touch. Dear students, captured the please images. switch camera. Varude sir, can you paste sir. a feedback link in the chat box so that everyone can submit the feedback so that they will get the certificate in the email? Yes, sir. I am sharing it. Have you captured the images? Yes, sir. Photo is Okay. taken. Okay. But many of students have not all switch on their camera. Those who have left, please switch on their camera. I will request everyone to check the chat box. I have pasted the feedback form. So once you submit the feedback, you will get the certificate on your mail ID itself. Thank you, everyone. Now I request everyone to please go through the feedback link, submit your feedback so that you can receive your certificate. Rabulu sir, may I proceed with the vote of thanks? Yes, sir. Surely, surely. Thank you, sir. So I take this opportunity to propose a vote of thanks on behalf of MES College of Engineering, Pune and Department of Mechanical Engineering. I thank Professor Ganesh Merasar for sharing his valuable views about professional patent writing. I must thank him for sharing his in-depth knowledge and research. Very systematic and easy to understand perspective was conveyed by our respected guest. And I hope
everyone has benefited by this session in every possible way. I must thank to Honorable Trustee Dr. A.J. Hake sir for supporting us. I also thank Dr. S.S. Sarode sir, Principal, MES College of Engineering, Dr. M.P. Dale ma'am, Vice Principal, MES College of Engineering, HOD Mechanical, Dr. V.N. Chaugule sir, HOD Computer, Dr. N.F. Sheikh ma'am, and President IIC-MESCOE, Dean Academics, Dr. V.N. Raibole sir, IPR Coordinator, Dr. P.N. Kota sir. Also, I want to thank my colleague for their technical support, Professor Kandarkar sir and Professor Sushant Jadhav sir. And last but not least, I will thank each and every participant for their participative contribution. So thank you very much, everyone. I hope everyone has filled the feedback form. Raibole sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you for joining. Thank you all student participants and all the staff members from various departments. I am really grateful to Advocate Ganesh Hingmere sir for sparing his valuable time with us. Thank you, sir. Thank you very much, everybody. And Yeah.